Namaste. Welcome to another edition of Navimash podcast. So, after a long time, we are back with our book reading sessions. We had to pause our book reading sessions for some unavoidable reasons, but now we have back, and we will start our session of first book reading with the fifth installation of our reading for the book Maharanas. The book is written by Dr. Omendra Ratnu. He has documented and wrote a very interesting and readable book on the history of Rajasthan specifically and the Maharanas who ruled there. As usual, we have with us Shekhar and also we have Nina. Both are the guest readers of our book reading session. So today they will be reading the book one by one, and we'll give the audience a minute to come and join. Before that, hi Shekhar, how are you? नमस्कार सबको। आपको भी नमस्कार दादा। मैं अच्छा हूँ। Acha, very good. Ninar, how are you doing? Namaste, Dada. I'm doing good. Cool. Okay, so let's start the reading. Let people will be joining one by one. So here we will be starting our Buddhist reading session where we had left off from the last session. So over to you, Shekhar and Ninar. Anyone you can start the reading, and then we will also take a pause and also we'll discuss few of the points here. Over to you. Yeah, I'll do the reading for this section today, The Amazing Saga of Chunda. So basically, where we're starting off from where we left off last time, we'll be discussing Maharana Lakha's oldest son, Chunda, and how his story unfolded, and Lakha's successor, Maharana Kumbha, his story, at least the start of it. So yeah, I'll begin the reading then. Okay, go ahead. Go ahead. Yeah, just a second. The third point that is especially important in Lakha's life is an interesting story laced with emotion, honor, and loyalty. Lakha's oldest son was a worthy prince destined to rule Mewad after him. Here's a photo of Rabat Chunda, the Bhishma of Mewad. Rinmul Marwad sent a coconut, a symbol of establishing matrimonial ties, for fixing his sister's marriage with Chunda. The emissary was received by Lakha in the Mewar court since Chunda was not around. Lakha informed the emissary that Chunda would soon return and accept the offer. Lakha added in a lighter vein, I don't suppose you send such playthings to an old grey beard like me. Chunda heard of this and refused the offer of Rinmul, saying that even if in jest, his father desired this alliance for himself, so there was no question of his accepting the offer. Rinmul was appalled at the thought of giving his sister to old Lakha and refused the proposal. Chunda asked for a Charan to act as a mediator from the Marwad group. So Chandan Charan was brought in to negotiate. Chandan Charan said to Chunda that the Maharana was old, and if they gave their daughter to him, the son born to him would be serving them all their life. What was the point of such a deal? Chunda replied, I relinquish my right to rule Chittor. I will serve the son of Maharana all my life. Chandan reported, what about your sons, O Chunda? Chunda replied, I take the oath of Ekling that none of my offspring will ever claim the throne of Mewar. Chandan went to Rinmul and convinced him, saying Chunda is a man of honor. He has renounced his right to Mewar. If our daughter were to bear a son from Lakha, he will be the heir. This opportunity should not be missed. Also, remember, O king, an old sandalwood is better than a new block. Thus, Lakha was married to Hansbai, the princess of Marwar. She gave birth to a son after 13 months of marriage.
The son, Mokal, went on to become a very just and brave ruler of Mewar. Can we ever fathom the level of sacrifice made by Chunda just for the sake of his father's subtle desire made in jest? While we see Hindus fighting real brothers for a few inches of land, can we even comprehend the love and sacrifice of Chunda? What would be the moral fiber of a man who could give up not only his own, also his children's right to rule Mewar? What spiritual quotient would dictate such indifference to power when confronted by moral dilemma? The only event of equivalence to Chunda's sacrifice is found in the Mahabharata, when Bhishma forsook his right to rule when faced with a similar predicament regarding his father Shantanu. However, Chunda's sacrifice surpasses that of Bhishma, since Chunda also renounced the right of all his future generations to claim the throne of Chittor. And what can be written of the great descendants of Chunda who remained loyal to a promise of their ancestor? The Rajputs of Mewar, the greatest amongst all warriors that Hindu Dharma had ever produced. But within the Sisodiyas, if there were any true Spartans, the real bearers of Kshatriya spirit, then it was the descendants of Chunda, known as Chundavat. One second. Yeah, Chunda served continue Mokal the. all his life and protected him from, yeah, external and internal enemies like a true brother would. Later, when Hans Bai, Mokal's mother, doubted Chunda's loyalty and asked him to leave, Chunda left Mewar with his brothers without a whimper and settled at Pegu, outside the limits of Mewar. Soon after Chunda had left Chittor, Mokal was murdered by his cousins and Kumbha ascended the throne. By this time, Mewar was practically under the control of Rao Rinmul, the brother of the grandmother, same Rinmul who had married his sister to Rana Lakshmi. The Sisodia Rajputs and the loyal Samans resented this control of Rathors over the affairs of Mewar. One night, a servant of Kumbha named Ikka was crying silently when his teardrop fell on Kumbha's feet. When Kumbha questioned him, he replied, "God is infested with Marwadis. If the Sisodias lose Mewar, Rathors will own it. That's why I weep." Kumbha consulted his mother Saubhagyavati since he could not trust anyone else. It was decided that Chunda would be recalled for help. Chunda immediately responded and arrived at Chittor with his troops. It was decided that Rinmul had to be eliminated. Dancer was to lure Rinmul and get him intoxicated one night to lay a trap to kill him. Dancer did her job and tied and inebriated Rinmul to the bed. Rinmul was an exceptional fighter in spite of his advanced age. An 8 to 10 swordsman attacked Rinmul, who was tired and unarmed. The latter managed to extricate one hand and using metal pitcher hit three attackers before he was overpowered and killed. Rinmul had a premonition of the attack on him and had sent his son Jodha out of Chittor before the attack. Jodha escaped to Marwar on hearing of his father's murder. Chunda was dispatched to kill Jodha. Chunda with his sons conquered Mandor, but Jodha escaped. After some time, Kumbha was advised by his mother and grandmother to forgive Jodha. Kumbha recalled Chunda to Mewar. Like Bhishma, Chunda too attained a ripe age. Unfortunately, not much is known about where and under what circumstances this valorous unsung son of Mewar attained his moksha. Men of Chunda's caliber and loyalty are like the pillars of a foundation, as they are neither noticed nor praised. They are the invisible bearers of Dharma. Such giants silently accept their destiny and say, Chunda is the greatest living embodiment of Dharma.
detachment from power and riches, unassuming love for father, immeasurable patriotism, and personality that transcended pain and pleasure, victory and defeat. Honorable men like Chunda were worthy examples to emulate in modern times. Chunda's children came to be called Chundavats and helped Mewad in the coming generations. Chundavats were critical in the future wars and stood with Maharana Singh and Maharana Pratap in their war campaigns. Chundavats remained loyal to Chittor's throne for generations and were always part of the Haraval group in the Mewad army. Chundavats remain a remarkably successful and proud community even today and are scattered around the globe. Besides the unthinkable sacrifice made by Chunda, this amazing story of Rawat Chunda and his successors teaches us two very crucial things. First, how high Rajputs used to hold the value of promise. Without any paperwork, the true worth of spoken word was demonstrated by our ancestors. If we look around, what is the singular physical faculty that separates man from animals? It is speech. A man is worthy of being called a man only as long he honors his word. Otherwise, he is just an animal. The extent to which Hindu society has tied itself in a web of lies can only be reversed if we learn from some lesson from the life of Rawat Chunda. Promise is the very premise of commerce, relationships, decency, family, and civilized conduct in society. Only those societies that honor and value a promise reach the pinnacles of civilization. A society that lives its and conducts its affairs around lies ends up with hollowness that affects every sphere of life. Such a society can never be affluent or happy. In this respect, the Japanese and most of the Western world are far ahead of Hindus. These societies value a promise to such an extent uh, that even major business deals are sealed on oral assurances. Another lesson to be learned from Chunda's life is the immense respect that was given to elders. Without any exception, Chunda's promise was sustained by all his subsequent generations. It is difficult to find comparable example in human history where promise was kept by the progeny of a man for 500 continuous years. Chundawats never eyed the throne of Mewad and never participated in any conspiracy against any Maharana. Unattached to worldly possessions, free of avarice, these glorious people continued to serve the Ranas without expecting anything in return. This was true Karma Yoga. A huge share of the glory of Mewad's victories goes to these brave sons of Dharma for giving their life and limb for the sake of a promise. Treachery and personal ambitions were unknown to this clan of Raj. The day Hindu society realizes the value of this fidelity to one's honor and dharma, that will be the day when we will start with a recovery as human beings. Loyalty is everything. Loyalty is humanity. Loyalty is worship. Loyalty is prayer. Loyalty is life itself. Tunda's glorious story also gives us a glimpse of the dark crevices of human mind where lust still lurks, unmindful of age, love, or even social disgrace. How can a father be so overwhelmed by his sexual urge, trample his own son's well deserved rights? Chunda has been immortalized by his act of love and sacrifice for his father, but this episode will always be a blot on the otherwise fair life of Maharana. Chunda's sacrifice was infinitely greater than Bhishma's. A person can still let go of his personal rights, but to forsake the right of all his future generations is something unheard of. Country paid a huge price for the loss of Shantanu in the form of Mahabharata war, which would have never happened if Bhishma hadn't taken the oath of celibacy. We will never know what would have happened if Chunda was to succeed Lakshmi. When the mindless lust of a man takes possession of his mind, how he forgets all sense of justice and love.
even for his own progeny. His a lesson for all of us to learn. Sons who does episode, Maharana Lakha was a worthy Sisodiya king. Rana Lakha in his old age set out to visit the eastern parts of India to keep Hindu pilgrimage sites free from the Mechas and died in one of the skirmishes. It was an amazing tradition in Mewad when the king in the Vanaprastha stage of his life would willingly renounce the throne and go to unknown frontiers with a few chosen warriors to randomly fight the Islamic forces harassing Hindu pilgrims anywhere in India. Thus, a very eventful and turbulent life, which was to leave an impression on all coming generations of the Maharanas of Mewar, came to an honorable end, an end befitting the Mewar lineage, known for defending the Hindu Dharma against Islamic marauders. That's the end of the chapter. Yes, I think interesting chapter, correct? So the author talks about trust as one of the most important factors between human relationships, and how trust is a kind of a glue which binds us together. And just wanted to your perspective, guest episode, also people who are listening or watching it on chat, that what do you think in our modern society, have we lost the art of trusting people in general? Like we are very untrustworthy of a lot of people, even our family members will not trust sometimes. So the author is ये highlighting something जनरली which is हमारे यहाँ पे important. नहीं Go ahead, go ट्रस्ट ahead. तो करना है, ये जो हमारे यहाँ पे जो ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज को देख के जो बात होती है ना, ट्रस्ट करना चाहिए, ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी और वो वाली बात होती है ना, हमारी सोसाइटी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे जो वेरिएशन है ना लोगों में, वो बहुत ज्यादा है ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर कोई यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो सारे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, Hmm. सारे एक ही Hmm. ट्राइब के हैं। ठीक है, तो आप हाई ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अब आप समझो कि आप नॉर्थ से आप हर गांव में आपके जो कस्टम्स सब चेंज हो जाते हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे दूसरे कस्टम वाले को? ये हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, और चाइना में भी नहीं होता ये कोई भी जो डाइवर्स सोसाइटी होती है ना, उसमें ये फंक्शनिंग है ही नहीं। ये फंक्शनिंग जो होती है ना, जैसे जापान की बात की ना, तो वो होमोजीनियस सोसाइटी है, उसी में काम करता है हाई ट्रस्ट वाला। दूसरे सोसाइटीज में काम नहीं करता ये। अमेरिका में भी जो हाई ट्रस्ट वाला जो ये जो एंग्लोस्फीयर है, इसके अंदर हाई ट्रस्ट जो है ना, वो सिर्फ व्हाइट्स के अंदर ही है। व्हाइट्स जो है ना, वो दूसरों को अंदर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जैसे कोई एशियंस हैं या दूसरे हैं ना, दूसरे रेस के, उनको ट्रस्ट नहीं करता ये। हाई ट्रस्ट भी इनका जो है वो व्हाइट्स पे ही खत्म हो जाता है। तो आई थिंक ये और जो डील मेकिंग की इन्होंने बात की ना, कि ऐसे ओरली डील करते थे, ये तो पूरा इन्होंने पता नहीं कहाँ से। जापान में तो मैं मानूंगा कि हाँ कुछ हद तक आप बोल सकते हो, पर वेस्टर्न सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तो 2 मिनट में आप मुकर जाएंगे। वो हमारे यहाँ पे तो फिर भी चलो एक हफ्ते तक चल जाएगा वो, इन द सेंस, पर वहाँ पे वो नहीं चलेगा। वहाँ पे तो आपको हर चीज रिटर्न चाहिए। अगर नहीं रिटर्न किया है ना आपने, रिटर्न कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी काम नहीं है वहाँ पे। ऐसा है, डील आप ओरली वहाँ कर ही नहीं सकते वेस्टर्न सोसाइटी में। Yeah, I think Rishi is gave a very good example that homogeneity leads to implicit belief. One more thing which is important here. So from ancient times, we had what we call is a kind of a community. Okay, so you had Rajputana, Rajputs. You had different communities who would live together, and they would trade, they would marry, they would like live a life as a community over a larger landmass. So we have Bengali people, we have Punjabis, we have Sindhis, we have in the east we have many people based on culture and language. Correct? So and it's a kind of a correct comes from our tribal instinct. Okay, so the humans evolved from very small groups of people living out of 200 was the maximum size that we see in ancient times when humans lived. So we still have it. So like there's a study which shows that you cannot remember more than 200 names
Okay, that is a limit we can remember. So you will be able to remember 200 names even you have met 1,000 people in your life. So yes, trust is intrinsic in nature. Like when we talk to people physically, we live with them, we talk with them, we understand their emotions. Then trust is built inherently over a time of period where you notice people's behavior, their actions, how they behave, and that creates it. And this modern society of people, we live in cities, we live in a kind of isolated islands, especially in big and small cities. So that creates, so that is against human nature, the way humans evolve over time. So that's it. Yeah. इसमें एक और भी है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कास्टों की बात आती है ना, उसका एक रीजन है कि जो कास्ट बेस्ड ट्रस्ट होता है ना, जैसे हम बात करते हैं ना होमोजेनिटी की, तो होमोजेनिटी हमें कास्ट में देखते हैं कि एक कास्ट वाला कास्ट के अंदर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि उसको उसका बिहेवियर पता है, कैसे वो बिहेव करता है, उसका क्या सोचने का तरीका है, उसको सब पता है। तो उसको पता है कि किस चीज में से ट्रस्ट कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। अभी एक रैंडम आदमी कोई दूसरे साइड के कंट्री के दूसरे साइड से आए तो आप उसको कैसे ट्रस्ट करोगे, उसके बारे में जानते भी नहीं होगे। ठीक है। उसके बाद में एक और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कास्ट जिस सेंस में हम समझते हैं वैसे नहीं होते थे। जैसे कि अगर आप ऋषिस को भी ले रहे हैं ना, जो साधु संत होते हैं ना, जैसे नागा साधु से या दूसरे टाइप के साधु से, तो इन सबका जो एक ये इनका एक सेक्ट होता है। ठीक है। तो उस सेक्ट का जो जो भी सेक्ट के होंगे ना, वो सबका बिहेवियर सेम होगा। ठीक है। तो लगभग लगभग सेम होगा। तो हमें पता है कि जो जो भी साधु जो रहेंगे ना, जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, मतलब जो अपना पारिवारिक संसार है, तो हमें पता है किस तरह का बिहेवियर होगा और किस हद तक हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग उनके वर्डों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे। ठीक है। क्योंकि वो एक ट्रस्ट, हमको पता है कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है। हम बिहेवियर हमने काफी जनरेशन तक उसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है। सेम चीज दूसरी तरफ है, पर हमारी सोसाइटी के अंदर हमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम हर किसी को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। इस वजह से अब एक तो कास्ट ग्रुप है, उसके बाद में फिर वो रीजन वाइज ग्रुप है। ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो राजस्थान में बहुत सारे रीजन है। अब दूसरे एक रीजन वाला जो है वो दूसरे रीजन वाले को ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है। And yes, and one more thing, correct, as mentioned by Rishi, that homogeneity is something which is plays a very critical role. Right. So if you look same, हाँ if हाँ you talk in the same language, if you eat the same food, if you behave in a certain way, then generally you would like identify that person as somebody you can trust inherently. Right. So we see, correct, we see Chinatowns. It's very interesting to see Chinatowns. Everywhere in this world, we have a Chinatown. Why we have a Chinatown? Because people, as a tribal instinct, they will try to live in a similar kind of environment with the people they can understand, they can relate to linguistically, culturally, food, consumption, behavior, what kind of movies they watch. So that is there. अच्छा, इसमें एक और We चीज है दादा कि hmm, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे ना, हमारे मत मान लो कि नॉर्थ में है और एक साउथ वाला है, तो ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है। पर वही चीज, वो प्रिंसिपल है, वो चेंज हो जाता है जब आप अमेरिका में जाते हो। ठीक है। अगर वहां इंडियन दिखेगा ना तो आप फट से ट्रस्ट कर लोगे। ठीक है। क्योंकि आपको एक मिनिमम जो जो जनरल आइडिया है ना, वो कैसे बिहेव करता है वो आपको पता है। ठीक है। पर इंडिया के अंदर तो जनरल बिहेवियर काम नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि सभी यहाँ वही है, सेम ही है, तो आपको वो जनरल फिर यहाँ काम नहीं आता है। पर वही अगर आप बाहर जाओगे तो वो काम आ जाएगा। ठीक है। अब से जैसे इंडिया का और चाइना का सोसाइटीज का है ना, तो यहाँ पे वो दो ग्रुप झगड़ा कर रहे होंगे ना, पर वही अगर बाहर मिलेंगे ना उसी सेम कंट्री के, तो फ्रेंड बन जाएंगे। सेम चीज चाइना का भी यही है। तो वो उधर भी ऐसे इन फाइटिंग होती रहती है, पर बाहर जाएंगे ना तो वो सेम चाइनीज, क्योंकि बाहर वाले तो उनको चाइनीज जानेंगे ना, उनको ऐसा तो बोलेंगे कि hmm. ये आप ये रीजन के हो, आप ये रीजन के, तो वो डिफरेंट तो कर नहीं पाएंगे इसलिए। Yes, we have an interesting question from Rishi. Do you think church as an institution mechanism also helped in the high trust phenomena? Mm, हाँ, मुझे देखो इसमें ये उस गलत उसके आप उस पे जा रहे हो। इससे चर्च का लेना देना नहीं है। चर्च जो है ना, ये ऑलरेडी जो फाउंडेशन बिल्ड करी हुई थी ना उस कल्चर की, उस पे चर्च बैठा है। ठीक है। आप समझ रहे हो? क्योंकि वही चर्च एक अफ्रीकन क्रिश्चियन है, उसको ट्रस्ट नहीं करेगा वही वाइट यूरोपियन। ठीक है। चर्च तो वहां पे भी वही है, चर्च तो यहाँ यूरोप में भी वही है। ठीक है।
ये जो चर्च वाला फिनोमिना है, ये प्री क्रिश्चियन एरा का वो जो है ना फिनोमिना, जो बिहेवियर है, प्री क्रिश्चियन जो सोसाइटी का बिहेवियर है ना, वो ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चर्च का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। चर्च तो बस एक साइड कैरेक्टर है, जो कि बस उसको वो रिलीजन जो है ना, अ, एक तरह से साइड कैरेक्टर आप बोल सकते हो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप हाई ट्रस्ट और लो ट्रस्ट उसके अंदर देखो तो। Yes, Abhay also joined. Abhay, you have something to say? हाँ, नमस्कार दादा, सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप। और महाराणाओं के बारे में कुछ नया जानने को मिला। अ, जो हाई ट्रस्ट और लो ट्रस्ट की बात है, मेरे विचार से वेस्टर्न सोसाइटी को हाई ट्रस्ट कहना ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए अभी अमेरिका में किस प्रकार से भारतीय मूल के लोगों के प्रति एक विद्वेष उत्पन्न हो रहा है, या अन्य जो मूल के लोग हैं या अन्य नस्ल के लोग हैं उनके प्रति विद्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो मैं उन्हें हाई ट्रस्ट सोसाइटी नहीं मानता हूँ उस दृष्टि से, क्योंकि होमोजीनियस सोसाइटी के लिए हाई ट्रस्ट या बोलना कि हम लोग हाई ट्रस्ट है वो आसान है। आपके हाई ट्रस्ट की परीक्षा तब होती है जब आप भारत जितने विविध हो, आपकी भाषा अलग हो, आपकी खान पान अलग हो, आपकी संस्कृति अलग हो। यदि उस दृष्टि से देखें तो हमारा समाज बहुत हाई ट्रस्ट रहा है कि हमने एक दूसरे की संस्कृति में आदान प्रदान किया है। बहुत सारे राजा महाराजा जो आपके कर्नाटक से आए थे, वो उन्होंने बंगाल में शासन किया और उन्होंने बंगाली संस्कृति को अपना लिया। अब उनके जो नाम थे वो बंगाली नाम बन चुके हैं, जबकि वो थे कर्नाटका से। तो मैं इसको लेके स्पष्ट नहीं हूं, पर हाई और लो ट्रस्ट वाले की जो बात है, आ, ये मुझे तो कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आती है। हाँ, बाद में बहुत कुछ जो अंग्रेजों द्वारा किया गया, कास्ट को लेकर के एकदम रिजिडिफाई कर दिया, आर्यन द्रविडियन नैरेटिव ला दिया, भाषा के नाम पर राज्यों का गठन किया। मुझे लगता है उससे ट्रस्ट में बहुत प्रभाव आया है भारत में। उससे ट्रस्ट में बहुत कमी आई कि हमारी भाषा खा जाएंगे या हमारी जो लोकल कल्चर है उसको अटैक कर देंगे। तो हम लोग एक दूसरे को ही ऐसा समझने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है कुछ और भी सत्य हो इसमें, पर मुझे ऐसा लगता हाँ नहीं, वो तो है, मतलब ब्रिटिशर्स ने तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है हमारी सोसाइटी को। पर जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो ना, वो वेस्टर्न सोसाइटी हाई ट्रस्ट वाली नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में देखो, वो तभी तक है जब तक वो यूरोप में है। ठीक है, आप बाहर जाओगे ना तो फिर वो वाइट, वो रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो वो होता है ना, होमोजेनिटी है, वो रेस में कन्वर्ट हो जाती है रेदर देन की रिलीजन। यूरोप में तो क्योंकि सब सेम दिखते हैं ना, जैसे इंडिया में, मैंने जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया ना, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या कि उस वहां पे वो सेम दिखता है, तो वो कल्चरल थिंग हो गई। ठीक है, यूरोप के अंदर तो हाई ट्रस्ट वाली। पर आप जैसे एंग्लोस्फीयर है ना, जैसे बाहर ये न्यूजीलैंड हो गया, ये सब दूसरी कंट्रीज है, इनके अंदर फिर वो रेस स्पेसिफिक ट्रस्ट हो जाता है, वो कल्चर उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो होमोजेनिटी जो है ना, वो कल्चर नहीं देता, वो रेस देती है वहां पे। इसलिए वो रेस रेस स्पेसिफिक हाई ट्रस्ट सोसाइटी होती है। तो वो खाली व्हाइट्स है ना, वो व्हाइट्स को ही ट्रस्ट करेंगे, ब्लैक्स को कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो ये आप बोल रहे थे ना कि इंडियंस के खिलाफ वो अटैक्स और वो सब बढ़ रहे हैं, जो हेट्रेड है वो भी बढ़ रही है, तो वो एक रेगुलर फिनोमेना है और एक जनरल बिहेवियर है उनका, हाई ट्रस्ट सोसाइटीज का, कि एक्सक्लूड कर दो जो जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, उसको एक्सक्लूड कर दो, ताकि आपको पता चले कि एनिमी कौन है। है। सुनाई दे रहा है आपको? तो मैं, यस यस, सुनाई मिल रहा है, बोलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो अब इसको हाई ट्रस्ट सोसाइटी और लो ट्रस्ट सोसाइटी की दृष्टि से देखे, या एक सोसाइटी जो बहुत ही यूनिफॉर्मिटी में मानती है, और जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, वो यूनिफॉर्मिटी में नहीं मानता है। वो मानता है कि जिसको जैसे रहना है रहने दो भाई, जब तक हमको तंग नहीं कर रहा है हमें क्या आपत्ति। तो ये भी बात है। तो हम लोग एक दूसरे की फटे में टांग नहीं अड़ाते, सीधी बात है। तो वो भी है। इसीलिए जैसे
आप देखिए कई सारे देश जैसे पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए, तो वो भाषा के आधार पर टूट गए। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर झड़प होती है पर देश नहीं टूटता। उसके पीछे एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कि हम लोग डाइवर्सिटी को लेके ज्यादा कंफर्टेबल है वेस्टर्न या इस्लामिक सोसाइटी की तुलना में। तो आ, तो मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा जो हाई ट्रस्ट है ना वो अलग प्रकार का है। हम लोग हाई ट्रस्ट इन द सेंस रखते हैं कि दूसरे यदि हमारे जैसा बिहेव नहीं कर रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे शत्रु हैं। हम ऐसा नहीं समझते। और वहीं आप वेस्टर्न कल्चर में देखिए तो दूसरे उनके जैसा व्यवहार नहीं करते या उनके जैसे दिखते भी नहीं है तो वो उनके शत्रु हो जाते। तो हाई ट्रस्ट और लो ट्रस्ट की जब बात आती है तो आई थिंक वी ट्रस्ट ह्यूमैनिटी मोर एज पीपल। जहाँ हम भारतीयों की बात करते हैं, इसीलिए संभवतः हमने इन्वेडर्स को भी ढंग से पहचाना नहीं कि उनकी मानसिकता क्या थी। तो ये भी हो सकता है। इसमें मुझे एक क्वेश्चन आया, ये मैं थॉट आया था कि ये जब हम हाई ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं कि जैसे हम इंडियन सोसाइटी उस कॉन्टेक्स्ट में अलग है, तो हमारा तो वेस्टर्न जो उनका जो होमोजेनिटी है वो अलग तरह के अलग हिस्सा देती है। जैसे आपने बोला ना कि जीने और जीने दो वाला जो हमारा प्रिंसिपल है, उसकी वजह से वो एक तरह से मेरे ख्याल से कि वो फाउंडेशन ले करता है हमारा जो ट्रस्ट है ना, तब जितना भी ट्रस्ट है वो उसका वो फाउंडेशन ले करता है। पर जब उस पे जो वो जो प्रिंसिपल है उस पे अगर आप हमला करते हैं ना, जैसे कि इन्होंने किया है, जो इन्वेडर्स है, तो जो 1000 ईयर का कॉलोनाइजेशन हुआ था उसके अंदर दोनों ने यही किया है कि जो हमारा जो प्रिंसिपल है जियो और जीने दो, उस क्योंकि वो एक सोसाइटी को क्या बोलते हैं, पूरे कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक गांठ की तरह बांध के रखता है। तो आई थिंक कि वो प्रिंसिपल पे जो अटैक हुआ है ना वो हमारे जो सोसाइटी आज जिस तरह बिहेव कर रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से वो है। क्योंकि उसपे जो आपका जो फाउंडेशन है ना, जिसपे आप ट्रस्ट कर रहे हो दूसरे हिंदूज को या दूसरे जो आपकी तरह नहीं दिखते हैं, फिर भी उसपे आप कुछ हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। वो फाउंडेशन ये था कि आप, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, और मैं आपको आप जो कर रहे हो वो करने दूंगा, ऐसा। पर जब उस प्रिंसिपल पे हमला होता है ना, तो फिर ये जो कास्ट और ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, रीजनल ग्रुप्स, और ये ज्यादा पावर उससे ड्रॉ करते हैं, ये जब प्रिंसिपल फेल होता है तो। हाँ, Yes. ये बात सच है क्योंकि क्योंकि आप देखिए हमारे समाज में भी एक डिस्ट्रस्ट था बहुत पहले। वेदों को यदि किसी ने अध्ययन किया हो, ऋग्वेद में, उसमें तो 10-12 जो ट्राइब्स थे उनके बीच में युद्ध ही दिखाया गया था ना। फिर बाद में उसका समाधान कैसे हुआ? सब जिसने जीता था वो युद्ध, उन्होंने कहा था कि आप सब देवी देवताओं को लाओ, सब अपने अपने देवी देवताओं को लाओ, हम सबको सामने बैठा के यज्ञ करें। तो हमने उसी समय इसका समाधान कर दिया था कि आप अपनी अपनी संस्कृति रखो, और हम सब अपनी अपनी संस्कृति रखते हुए भी एक समाधान निकलते हैं साथ में रहने। मेरे ख्याल से उस समय वो समाधान किया गया था। बाद में जो भी गतिविधियां हुई इसके अनुसार जो भी हुआ हमारे समाज में वो अलग अलग विषय। ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारा जो आप बोल रहे हो ना कि उधर हमने डिसाइड किया बैठ के कि एक जो ट्रस्ट, जो जनरल ट्रस्ट डेवलप करना था अलग अलग कम्युनिटीज या ट्राइब्स के बीच में, तो ये एक फाउंडेशन प्रिंसिपल था। तो अगर इस प्रिंसिपल को अगर तोड़ दिया जाए तो क्योंकि हमको जोड़े तो इसी प्रिंसिपल ने रख रखा है ना। जब हमारे पास में कुछ ऐसे ट्राइब्स आ जाएं जो कि इस प्रिंसिपल को मानना ही नहीं चाहते, तो जो दूसरे ट्राइब्स है ना उनको ज्यादा हार्म होता है जो मानना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके, वो सलामी स्लाइसिंग करके उन ट्राइब्स को एक एक करके निगल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारा जो ये है ना, जो शत्रुबोध का जो दोष आता है कि हम शत्रुबोध हमको नहीं पता है या हम जानते नहीं है, तो आई थिंक ये हमें उसके अंदर ज्यादा दोष देता है कि हमने ये जाना क्यों नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसका समाधान क्यों नहीं किया। हम अभी भी उन ट्राइब्स को जो, क्योंकि पहले वाले जो टर्क्स थे ना, जो तुर्कशान तुर्कशान जो पहले वाले थे, वो आई थिंक
अटैक करने के बाद में वो हमारे कल्चर के अंदर वो भी एक ट्राइब की तरह आके वो प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते थे। पर इनको भी हमने कोशिश की कि इनको भी यज्ञ में बिठा दे, पर ये मानते हैं कि यज्ञ ही गलत है। तो यज्ञ में ये भगवान को ही नहीं मानते कि भगवान और यज्ञ से इनको कोई लेना देना ही नहीं। तो इनको कैसे बिठाओगे यज्ञ में? हाँ, वही, जो धर्म को मानते ही नहीं है, जो अधर्म करना चाहते हैं, तो उनका तो कोई समाधान नहीं है। अधर्म का तो नाश ही करना पड़ता है, और वो हमने नहीं समझा कि हमारे शत्रु किस प्रकार से। ठीक है, हमारे साथ आप जारी रखिए। ऋषि ज्वाइन किया है। ऋषि, आपका कुछ? Yes. नमस्ते दादा और नमस्ते सभी को। यहाँ द डिस्कशन इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ी देर बाद, पहले अभय बोल ले, मैं फिर उसके बाद में आता हूँ। I think Abhay is done, so you can say. Oh, okay. Yeah, the whole high trust thing, I think उसमें कुछ विषय है जो हमें याद रखने होंगे कि अपने सोसाइटी में वो धर्म का भी तो कॉन्सेप्ट है ना, जो मतलब याद रखा जाता है कि मैं उसी का मैं एक रेफरेंस देने वाला था, सो आई विल बी गिविंग इट। मैं बोल देता हूँ ऐसे। Okay, wait. Before we say that, we need to dig bit historically. Historically, Europe has 2 world wars. और उसके पहले भी, before even that, the old European kingdoms would fight with each other. So Yes. this high trust society is a very kind of a modern phenomena. So fighting between 2 groups of people or a region or a state is quite common across the globe. So Europeans were fighting, tribes are fighting in South America, North America, in India, in Bharat, in ancient Bharat. Every kingdom would fight another kingdom to gain territory. Okay, so this fighting among people is quite common. Correct? The war was the most common thing from Middle Ages to ancient times to even modern times, before Second World War. Okay, so if we are fighting for so many millennia, okay, across the globe, most common thing. So when this term high trust society came in, and how it evolved? Correct. It only evolved after Second World War, when Europe destroyed themselves by fighting wars. Okay. Only then this homogeneity and other things came about. Yeah. इसमें मुझे एक प्रश्न जोड़ना है। जोड़ रहे हो? हाँ भाई, अभय तुम पर जोड़ लो। एक प्रश्न जोड़ना है कि देखिए, हमारे समाज की जब बात आती है लो ट्रस्ट की, तो हमने अपने विविधता को मिटाया नहीं है, विविधता को नष्ट नहीं किया। जबकि यूरोप में क्या हुआ है कि बहुत सारी विविध संस्कृतियों को नष्ट कर दिया गया। तो उनके लिए तो हाई ट्रस्ट सोसाइटी बनाना फिर सरल हो गया, क्योंकि उन्होंने होमोजेनाइज कर दिया अपने कल्चर को। तो क्या ये जो हम बोलते हैं कि यूरोप ज्यादा हाई ट्रस्ट है, उसका आधार ही मतलब ऐसा है जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने वो डाइवर्सिटी के विरुद्ध है और हम डाइवर्सिटी को लेकर चलने वाले। क्या ऐसा आप लोगों को लगता है, या आपके क्या विचार है इस पर? जो भी बोल रहे हो इस पर भी अपने विचार रख दीजिए। ऋषि, एक्चुअली मैं इस पर मैं एड ऑन कर रहा था। आप बोल रहे हो ना कि हाई ट्रस्ट वाला, ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी थी उनकी, पर वो ट्राइब्स पे, उनके जो ट्राइब्स थे ना वो छोटे थे पहले। जैसे इनका इंग्लिश ट्राइब हो गया, एंग्लो सैक्सन्स का ट्राइब हो गया, या फ्रेंच ट्राइब हो गया। तो इन छोटे छोटे कंट्रीज थे ना, इनके अंदर कंट्रीज के अंदर हाई ट्रस्ट था। पर क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ना, ये एनिमी बताने के लिए क्या करते थे कि खुद की सोसाइटी में हाई ट्रस्ट होना तो इनको एनिमी चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हाई ट्रस्ट होता है। ये अपने आप हाई ट्रस्ट कभी नहीं होता उन सोसाइटीज के अंदर, जहां तक मैंने देखा है। तो ये क्या करते हैं, फिर उसको एनिमी को, जब आपको एनिमी वो लोग बना देते हैं ना, तो उनको क्या होता है, वो एक्सटिंक्ट करते हैं, उनको हंट करते हैं एक्सटिंक्शन तक। ठीक है, एनिमीज को आप देखोगे ना, ये कॉलोनाइजेशन क्या इन्होंने किया क्यों है, वो जो एक्सटेंशन किया है ना अलग अलग कम्युनिटीज का या ट्राइब्स का, तो उसी वजह से किया है इन्होंने कि उनको एक बार एनिमी दिखता है ना, तो वो उनको पूरी तरह से खत्म करे बिना वो रुक नहीं सकते। ठीक है,
वो एक तरह से वो मशीन चालू हो जाती है ना इनकी हाइड्रस सोसाइटी वाली, वो बंद नहीं कर सकते फिर ये जो एनिमी के अगेंस्ट में। दूसरा पॉइंट ये था कि आप ये बात तो सही बोल रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, पर वो एक यूरोपियन वाली जो इफेक्ट है ना, अगर आप रशिया को छोड़ दो तो होल यूरोप में हाइड्रस जो आया है वो, आई थिंक ये इकोनॉमिक जो इनका था ना, इकोनॉमिक जो इन्होंने ब्लॉक बना रखा था उसका ज्यादा था रीजन, और यूएसएसआर के अगेंस्ट में था ना, इस वजह से भी वो ज्यादा बड़ा रीजन उन्होंने प्ले किया था। और उसके बाद में फिर वो रेस का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, और वो सब अलग अलग एड ऑन होता रहता है उसके अंदर, तो बिल्डअप होता है वो। Okay, let me add one more point to this. So, as Rishi mentioned a few minutes ago, that Christianity also would have played a role because, like when Europe became fully Christian, so they were primarily Catholics. Okay, you also had Protestant and other sects going, but Catholics were quite in majority. So this uh, conversion of Europe to a Christian majority country, okay, would that would mean that the consumption pattern and thinking patterns, and well, remember one more thing, Christianity and other Abrahamic faiths are actually uh, they are called congregation religions, correct? So the practice of going to church every week, like the whole village or a small town, okay, or a small village, everybody would go to church and talk to each other, okay, know each other, okay, their families, kids, everybody would go. So this congregation actually creates a kind of environment where you get to know each other, okay? And that also facilitate bit more trust between people, that they know, okay, I know this person, he comes every week on the church uh, for the prayers, okay, and that creates a kind of bond, a kind of trust over time. That also I think played a part, Rishi and other people. Exactly. That was the point actually. So when I mentioned about the church, I was mentioning about this congregation issue. So church में जब मतलब रोज संडे को जाना होता है तो you have to deal with many set of people, right? So कुछ irritating होते हैं, कुछ ज्यादा somber होते हैं, तो हर किसी को पता रहता है कि वो है कैसा, उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए इत्यादि। और अगर किसी को अगर कुछ हो जाए, मतलब like let's say someone is not coming to the church, then everyone starts noticing it and they start to think, okay, उसका कुछ problem हुआ है, चलो उसको जाके पूछ के आते हैं, उसको क्या हुआ। So this whole group based attitude comes into them, and I think in India वो at least मैंने साउथ में तो ये देखा है कि वो विलेज में जो यात्रा होता है ना, यहाँ पे बंगाल में भी है वो यात्रा जो होता है या कथा वाचन इत्यादि, that also helps in that congregation attitude as well. So India में भी वो हुआ है और यूरोप में चर्च के थ्रू हुआ है. That was my point actually, Bhupenda. Yes, now Vishnu. Yes, and yes, one more thing, correct. So as Rishi also mentioned, correct, the 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 overarching dharma, the umbrella of dharma, correct. So like dharma created a first principles for the people of different color, ethnicity, and background to actually interact and talk to each other. Because the primary principle was that, okay, I am following dharma. Okay. It could be different rituals, but there are many more common things as well within when you follow dharma, correct? Like when you do puja, when you initiate a puja, you always invoke Sri Ganesh before doing the puja or any activity. So even if you see today the movies, okay, the Bollywood movies, the movies start with Sri Ganesh as a auspicious beginning. So the commonality which Dharma provided in terms of principles, rituals, that also connected different communities, so they could connect and talk to each other, share ideas on them. So Absolutely. as Christianity did for the Europeans and Americans, Dharma was already there from ancient times to actually bridge the divide over food, ethnicity, consumption, behavior patterns, and created a ground where they could connect. So I think we have actually read in our correct previous book reading sessions regarding the corporate life of ancient India, that there were tribes, that there are a group of people or tribes who would travel from one part of Bharat to another part of Bharat
and do their business. So correct. So they were actually, we were talking to each other, and working with each other, doing business, getting married. So everything was happening. It was not like because we didn't speak the language, we did not interact. We did. दादा ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप आपको दिखेगा कि ये आपको शो करेगा कि कहाँ ओरिजिनली जो हाइट्रस सोसाइटीज थी वो थी कहाँ पे। ये जो डार्क ब्लू है ना रीजन, ये यहीं पे थी खाली हाइट्रस सोसाइटी। क्योंकि जो खाना जो होता है ना वो हर किसी को नहीं दिया जाता है घर पे आते तो, अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो तो। हमारे यहाँ पे भी इंडिया के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो जो अगर कोई गेस्ट कभी घर पे आएगा ना, तो अगर आपके कम्युनिटी का होगा ना तभी उसको खाना पूछा जाएगा, ठीक है? नहीं तो कभी उसको खाना नहीं पूछा जाता, खाली पानी पूछा जाता है, ठीक है? तो ओरिजिनल हाइट्रस सोसाइटीज जो थी ना वो हमेशा ये जो सदर्न यूरोप है ना, जहाँ पे ये रोमन एम्पायर का इन्होंने जो थोड़ा बहुत बना रखा है वहां पे था, ठीक है? इनका जो रोमन्स, मुझे नहीं लगता कि रोमन्स का ज्यादा कुछ इसके अंदर था योगदान हाइट्रस सोसाइटीज के अंदर। मुझे मेरा मानना है कि ये जो ग्रीस जो है ना, ये ओरिजिनल हाइट्रस सोसाइटीज थी। रोमन्स को तो मुझे नहीं लगता था वो हाइट्रस सोसाइटी थी। और जो एंग्लो सेक्शन है ना वो ऑपोजिट है एकदम उसके, ठीक है? इनका हाइट्रस सोसाइटी कभी था नहीं। अगर आप आज भी अगर वहां जाके नोटिस करोगे ना, एंग्लो सेक्शन सोसाइटीज कभी हाइट्रस नहीं होती, ठीक है? और अगर आप अमेरिका में भी देखोगे ना तो कोस्टल जो सिटीज है ना, ठीक है, आपको हाइट्रस सिर्फ इंटीरियर में मिलेगा अमेरिका के, ठीक है? इंटीरियर में जो है ना सारे ये जो एथनिसिटी है ना, आई थिंक इंटीरियर है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली कहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर में, पर जहाँ एथनिसिटी जो होगी ना उसके हिसाब से आपको ट्रस्ट मिलेगा, देखना कभी। हाँ, Nina wanted to So speak I would like actually. to. Yes. I wanted to add a point on this high trust society thing. So you all are like factoring in homogeneity, right? So I think that I think from a different approach. I think this high trust thing is implemented by the state, and why I'm saying so is that because in Europe, state control was really really high, especially by the church. So they used to like have compulsory attendance in villages and all, and they would notice if people are not coming, then they would go and check if they are actually heretics or not. If someone has like I was just reading on how exactly they used to run the churches and all. So the parish priest, they had to like check everyone's process and everything, and how they do the rituals at home and all, and they have to like be sure it's followed in the exact Catholic way. Otherwise, they would be called and burnt on the stake. So ये yeah, कहाँ पे होता था there was a एग्जैक्टली, lot कहाँ of पे होता? top-down. ये मैंने एग्जांपल देखा बोहेमिया का, हाँ देखा, वो जो जर्मनी के अंदर है ना। उस टाइम में तो जर्मन सोसाइटी है ना वो हाइट्रस अभी चेक सोसाइटी थी नहीं, कभी भी नहीं। रिपब्लिक में है। अरे वो जर्मनी वाला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अच्छा अभी चेक चलिए चलिए नहीं जारी नहीं, रख। अरे नहीं नहीं, समझो जर्मन्स थे ना वो सारे ट्राइब्स थे, ठीक है? वो एक दूसरे के अंदर नहीं नहीं ये मैं लड़ते रहते थे पूरे टाइम पे, अरे ये ठीक है? तो जर्मनी ये नहीं है, इनकी ये सोसाइटी, चेक रिपब्लिक। मैं अरे वो पूरा एरिया वो स्लाव जर्मन, एक उसका मिनट जर्मन लैंड है पूरा, वो लैंड पूरा मैं जर्मन अपनी है। बात स्पष्ट कर दूं। मैं यहाँ पर एचवी दीदी के चैनल पर जो जर्मनी जर्मनी चल रहा था उसके संदर्भ में बोल रहा। हाँ बोलो। हाँ हो गया। अरे मैं उसका नहीं बोल रहा, मैं ये जर्मन लैंड जो है ना ये बता रहा है ना। आज का जर्मनी है ना, वो जर्मनी नहीं था ओरिजिनली। ओरिजिनली जर्मन तो ये ईस्टर्न, जो ईस्टर्न पार्ट है ना आज वेस्टर्न जर्मनी वेस्टर्न का, जो वो जर्मनी रोमन था। टेरिटरी था। हाँ, जो ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न पोलैंड वेस्टर्न और ये वेस्टर्न चेक रिपब्लिक और ये सब बोल रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो था वो सेंट्रल जर्मन था, ठीक है? वो जर्मनी था। ये आज का जो फ्रेंच बॉर्डर पे लगता है ना वो हिस्टोरिकली जर्मन नहीं था वो, ठीक है? तब इन अ सेंस जर्मन था पर ओरिजिनल जर्मन नहीं था वो, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? जो मतलब उसका जो आउटर एरिया था जर्मनी, जर्मन का जैसे ही एरिया था वो। जैसे रशिया है कि हाँ ओरिजिनल वो तो रशिया जानता हूँ। यूक्रेन में है, कीव में है ना।
नहीं इंडिया का वैसा ही मानो कुछ ना, मैं बोल इंडिया चर्च का कंट्रोल का example देता हूँ। पॉइंट पे क्या बोलोगे? नहीं, इंडिया का बताता हूँ ना आपको, शेखर समझ आया किसको। शेखर हाँ शेखर हाँ वो हाँ। चर्च कंट्रोल के पॉइंट पे कुछ है बोलने को? नहीं नहीं, वो एकदम सही है। वहां पे ये चर्च वाला था, मैं बोल रहा हूँ जगह जो है ना, इसी कहाँ से मेरे करना को पड़ लगता रहा है था वो बता। होमोजेनिटी पैदा होती है। इसी से होमोजेनिटी हाँ पैदा होती है सही कि में उससे इतना होती है। इंक्विजिशन चला था वहाँ, जो हाँ मतलब हाँ, घर 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 में अरे जाके कितना देखते थे 1000 कोई साल तक जू तो चला था नहीं है। वो जो है ना पूरा। हाँ, वो हम्म, 1000 साल ये जो सोसाइटीज है ना, इनको आप कभी हाइट्रस्ट ये कितना ही वो कर लो, इम्पोजिशन कितना ही कर लो हाइट्रस्ट का, पर ये आप जो इनके अंदर जीन्स के नहीं है, इनके जीन्स के अंदर नहीं है वो हाइट्रस्ट, जो हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जैसे वो ह्यूमंस के अंदर है ही नहीं हाँ हाइट्रस्ट तो कहीं पे भी, पर जो थोड़ा बहुत भी जहाँ मिलता है ना, वो सिमिलर वहां पे मिलता है। जैसे ये जो सदर्न उसमें मिलेगा ना, आप देखो सदर्न यूरोप में सारे दिखते एक जैसे, स्पेनिश भी सेम दिखेगा, इटालियन भी सेम दिखेगा, ग्रीक ग्रीक ऐसा ग्रीक कुछ वाला भी नहीं है। सेम ही दिखेगा। नहीं नहीं, अरे यार ऐसा मैं ऐसा नहीं बोला, जनरली बोल रहा हूँ कि एक एरिया के अंदर जनरल पॉपुलेशन होती है ना, वो लगभग लगभग सेम दिखती है, ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे तो बहुत Wait, डिफरेंस wait. होता है। A question. Yeah, हाँ a अब बाहर question. वाले को Nina. सब एक जैसे what लगते हैं, what जैसे सबको इंडियन एक जैसे लगते हैं। Nina, I Nina, want Nina. to add one एक point. question. Okay, okay, अच्छा. okay. I want to Let add one Rishi point. wait. Let Rishi ask question. Yes, Rishi, go ahead. या नीना, तूने जो अभी जो पॉइंट बोला ना अबाउट चर्च इंक्विजिशंस एंड ऑल, तो देख ये जो अभी जो पिक्चर हम देख रहे हैं, द सदर्न पार्ट्स विच आर सो कॉल्ड हाई ट्रस्ट सोसाइटीज, वो सारे देख तो कैथोलिक या फिर ऑर्थोडॉक्स है, और बाकी जितने भी लो ट्रस्ट है ये सारे प्रोटेस्टेंट है. सो डू यू थिंक देयर इज करेक्ट। समथिंग टू कनेक्ट ओवर हियर? हाँ, मुझे ये भी पॉइंट आउट करना था कि जो रेड में है और जो पिंक में भी है, मेनली प्रोटेस्टेंट सोसाइटीज हैं, और थोड़े एक्सेप्शंस छोड़ दे, जैसे स्कॉटलैंड, और एस्टोनिया वगैरह, वो तो ये आउटलायर्स। बहुत पर वो मेनली बहुत वही लेट आता है। कैथलिक प्रोटेस्टेंट डिवाइड दिख रहा है। आई थिंक ये मैं पर जहां तक इसको जिस एंगल से देखता हूँ, मेरा मानना है जो आज जो हम्म, ये नॉर्थर्न पोलैंड और ये है ना, इस्टोनिया लातविया ये वाला रीजन, ये पूरे सारे के सारे ये पेगन्स थे। लास्ट पेगन वहीं पे थे खाली, ठीक है। तो पेगन सोसाइटीज जो होती है ना, उनके हाँ हाँ अंदर वही पे। इंटरनल ट्रस्ट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अब्राहमिक से, ठीक है। अब्राहमिक समय दिखाते हैं ट्रस्ट है, पर उनमें नहीं होता है ट्रस्ट, ठीक है। अब्राहमिक सोसाइटी में रिलेटिवली ट्रस्ट नहीं होता है पेगन सोसाइटी से, ठीक है, अगर आप कंपेयर मैं करोगे। बताऊं यहाँ पे मेरे ख्याल प्रॉब्लम से क्या है. Pagan societies are more secure by nature, and Abrahamic societies are more insecure by nature. Insecurity ज्यादा होती है Abrahamic societies. हम्म, वो मैं उस दिखता है. एंगल पर नहीं जा रहा, मैं उस एंगल पर नहीं जा मतलब रहा था। मैं बस वही बता रहा था कि जब इनसिक्योरिटी होती है ना, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है, कैसा निकलेगा, इसको मेरे जैसा होना चाहिए. वो इनसिक्योरिटी हाँ, है एब्राहमिक और तभी सोसाइटी वो में. रेशियल फीलिंग पैदा होती है। वो तो जो ए, रेस वाली पूरी थियरी अब है ना, जैसे हम इसको स्टडी करते हैं, ये तो पूरा इसका क्रिश्चियनिटी का देन है पूरा। आई थिंक ज्यूज का देन है ओरिजिनली, पर क्रिश्चियनिटी ने कॉपी कर लिया वो। यदि हम मैं बोल देखें रहा हमारे था वो भारत में हेमेटिक सेमेटिक थ्योरी। अच्छा, आप बोल लीजिए, मुझे लगा आपका हो गया. हाँ, वो हेमेटिक थ्योरी था, जिसमें हैम के डिसेंडेंट्स को सारे जो आउटकास्ट हो गए थे उनको मतलब ब्लैक बोलते हैं। फ्लैक्स वाला मैंने नहीं स्टडी किया अभी तक। इनका क्या झगड़ा क्या है, मुझे अभी भी वो समझ नहीं आता, क्योंकि जो एंग्लोज है उनको हमेशा ये यशु को ये लोग वाइट दिखाएंगे, पर वो कभी वाइट था नहीं। वो मुझे अभी भी एंगल इनका समझ नहीं आता क्यों करता है ऐसा। उनको तो ग्रीक्स को भी वाइट दिखाना है। हाँ ग्रीक्स, अरे हाँ, ग्रीक तो हम इंडियन दिखते हैं, नॉर्थ इंडियन दिखते हैं ग्रीक तो वाइट दिखते भी नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा मैं बोल रहा था ये जो बिल्कुल। जर्मन है ना, अच्छा इसमें एक्सेप्शन है कि जर्मन जर्मन जो एरिया है ना वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो पेगन्स थे ना, उनमें भी हाई ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। वो ट्राइब जो इनके ट्राइब्स होते थे ना, उनमें हाई ट्रस्ट मिलेगा, क्योंकि वो तो ट्राइब्स उनमें मिलना ही है। पर जो जर्मन एज ए एथनिक ग्रुप है ना, उनमें भी इनको हाई ट्रस्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। वो कम मिलेगा।
रिलेटिवली, अगर आप दूसरे उससे पेगन से कंपेयर करो तो हिस्टोरिकली ये जो देखोगे जो इनका कितने बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं प्रोटेस्टेंट कैथलिक के बीच में यही जर्मनी में। वो पूरा एरिया हमेशा वो मैसेकर्स का हो रहा है, उसका कल्चर ही मैसेकर्स का है एक्चुअली। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना तो ये जर्मनी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा पीरियड आया होगा जहाँ मैसेकर्स नहीं हुए। ठीक है, अगर आप ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर छोड़ दो तो उस पीरियड को, उसमें भी बहुत हुए होंगे कि पता नहीं हमें, पर अ, वो जर्मन सोसाइटी जो है ना वो बहुत अजीब है अगर आप रेस्ट ऑफ द उससे यूरोप से देखो तो। Okay, let's go ahead and read. Okay, and then we will continue the discussion. Let's read a few more pages, and then we can discuss again. मुझे Yes, yes. एक धर्म पे बात बोलनी थी, उसके बाद आप दोबारा Yeah. से रीडिंग चालू कर दीजिए। Hmm. हमारे Please go जो ahead. धर्म की परिकल्पना है उसकी विशेषता क्या है, और ये हम आप देखेंगे सब जगह मिलेगा कि हम लोग बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं मानता हूँ हमारी डाइवर्सिटी में एक यूनिटी है। जैसे धर्म की एक परिभाषा है कि जो सस्टेन करता है, जो एक व्यवस्था को बनाए रखता है, वो धर्म है। पर हम ये भी जानते हैं कि सब जगह के लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है वो समान नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी काल, परिस्थिति, भूगोल ये सबसे प्रभावित होता है। तो इसीलिए भी हम विविधता को स्वीकार कर लेते, पर हमें एक एकता भी है कि हम कोई जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, कोई बंगाली व्यक्ति भी मेरे घर में आएगा या कोई दक्षिण भारतीय भी मेरे घर में आएगा तो हम उसको भोजन प्रस्तुत करेंगे कि आप खाना खा के जाइए। वो एक विश्वास रहता है क्योंकि हमको पता है कि एक धार्मिक अ, आधार है हमारे होने का। या फिर आप हमारे भाषाओं में भी देख लीजिए, हमारी भाषाओं में विविधता है पर एक कड़ी है जो हमारी भाषाओं को जोड़ता है, जैसे संस्कृत। या आप हमारे अल्फाबेट्स को भी देख लीजिए कि कोई किसी भी भाषा या लिपि में आप वर्णों परिचय या वर्णमाला को देखें तो क ख ग घ और अ आ इ ई ही होता है और कुछ नहीं होता। भले ही लिपि अलग हो, या हमारा पहनावा, साड़ी भी साड़ी ही होती है सब जगह, पर अलग अलग प्रकार की होती है। वैसे ही धोती भी अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। तो हमारे विविधता के पीछे भी एक एकता है। लोग विविधता में खो जाते पर वो एकता, वो एक सूत्र नहीं देखते जो हमको जोड़ती है। और इसी कारण से हमारे समाज में वो एक व्यापक स्तर पर विश्वास है विविधता होने के बाद। Interesting. Okay, anybody किसी और कुछ बोलना है, or else we will just read a few more pages No, and no, no, then. no. No, no, no. On the point of Abhay, we can speak later. पहले पढ़ लेते हैं, आप वो दिखा दीजिए। Shekhar, you need to share your screen because you have that PDF. Or Nina can share your screen. Yeah, go ahead. महाराणा कुंभकर्मा सिंह, ठीक है, द इनविंसिबल जीनियस from 1433 to 1468. After Maharana Lakha, his son Mokal was born when Lakha was of advanced age, became the Maharana of Mewad. Mokal was equally aggressive and wise as his father Maharana Lakha and expanded the frontiers of Mewar while fighting and defeating the neighboring Muslim states of Malwa and Gujarat, and also a huge army of Delhi Sultanate. It is certain that Mughal defeated a ruler of Delhi according to the inscriptions found at Chittor and Eklinchi. If we match the timelines of Tughlaq and Mewar, it could be Gyanthuddin Tughlaq or Muhammad Shah that was defeated by Mughal at Jawar. Unfortunately, Mughal's rising career was abruptly cut off by his distant cousin Chacha and Mira, who were instigated by an unintended satire by Mughal and killed him in his sleep.
Before this tragic end, Mughal was an active king, fighting the Islamic forces and expanding Mewar's borders. He had multiple wives, and two of his queens got pregnant simultaneously. According to folklore, the younger queen, jealous of the elder one, performed some tantric trick on the elder queen, due to which the elder one went past the gestation period but did not enter labor. The tantric spell was performed through a earthen pitcher that was kept by the younger queen to be effective. When royal well-wishers heard of queen not delivering past the gestation period, they traveled to Ramdevra in Marwa desert to a living deity, Baba Ramdev, for help. Baba Ramdev had already decided to leave for his body and was in Samadhi. He advised the Mewar chiefs to go to Dharam Swarupji, who was Baba Ramdev's uncle and had been bestowed with similar metaphysical powers as him. ठीक है। ये जो रामदेवरा है ना, ये काफी सिग्निफिकेंट साइट है राजपूत्स के लिए और जो पूरा मारवाड़ जो रीजन है ना उनके लिए, क्योंकि जो आई थिंक ये लोकल डेटी है काफी बड़े वहाँ पे। ठीक है, इनके वो कुल देवता माने जाते हैं वहाँ। Dharam Swarup consented to help and march toward Mewar. He is supposed to have performed multiple miracles en route, and even today his temples stand and various consecration melas are organized to commemorate his help to the house of Mewar. But all his efforts to break the spell that was cast on the queen and induce childbirth failed. Then Dharam Swarup told the Samants to falsely announce the birth of a son by playing drums and distributing sweets. It is said that when the younger queen heard the noise of nagadas, she broke the pitcher, which was the edifice of the spell on the elder queen, in a state of fury. The elder queen immediately went into labor, and a son was born to her in 1417. The period had been in utero for 10 months, a full 1 month over the normal human gestation period. An earthen pitcher is called Kumbha in Sanskrit, so the newborn child was named Kumbha Karna and lovingly called Maharana Kumbha in Mewad. Kumbha was to inherit a vast kingdom of Mewad, well preserved and plush with funds and riches collected by his past 3 generations. Kumbha went on to become one of the most successful kings of Mewar. He is considered to belong to the class of all-time great kings that ever ruled Bharat by a long contemporary historians. He is placed in the same category as Ashoka, Harsha, Samudragupta or Chandragupta Vikramaditya. Kumbha inherited a royal house which was at war with itself because of the conflicting loyalties between Rathors and Sisodiyas. The Sisodiyas resented the control of Rathors on day-to-day affairs of the state, especially under Rinmul Rathor, the maternal grandfather of Kumbha. Along with his wife's mother, the Rathor grandmother, who was married to Kumbha's grandfather Lakha, maternal grandfather Rao Rinmil Rathor, and his other chieftains with conflicting loyalties, Kumbha set out to first put his own house in order. It is not in the domain of this book to take the reader through the internal strife and manipulations of the Mewar family, and hence the focus remains on the military campaign, fortification of the Mewar, and the art and architecture during Kumbha's reign. All of these scaled unparalleled heights during Kumbha's 4-decade-long rule over Mewar. We will briefly talk about Kumbha's personality that left irreplaceable marks on the trajectory of Mewar dynasty. We will also detail how Kumbha spent his life destroying the combined forces of Islamic states of Malwa, Gujarat, and Nagaur. It has rarely happened in human history for one state to have surpassed so many energetic, successful princes as Mewar did for several centuries. Mewar was now in the middle of its glorious rise,
built on the ashes of its brave sons and daughters who laid down their life in protecting it from Arab and Turk assassins. A century had lapsed since the Dance of Death by Alauddin Khilji at Chittor, where he destroyed every Hindu temple and building of consequence and dishonored women leading to self-immolation by Padmini and her companions. Mewar had bounced back with vengeance of her own. Chittor had recovered from the murderous assaults of Khilji, and the Tughlaqs and new defenders of Hinduism had sprung up all around Mewar. As James Todd writes beautifully about the impending Turk invasion led by Babur, all that was wanting to argue about her resources against the storms that was brewing on the brows of Cau- uh, Cau- Caucasus and the banks of Oxus, and were destined to burst out on the head of his grandson Sanga, was affected by Maharana Kumbha. Todd is referring to the impending clash between Kumbha's grandson Sanga and Babur in 1527 at Khanwa. Kumbha possessed Hamid's energy and Lakha's fortitude and taste for arts. With this genius combination, Kumbha succeeded in every venture he undertook, rising once again the crimson banner of Mewar on the banks of Ghaggar, where a Mewar prince had laid down his life, fighting alongside the great Prithviraj Chauhan against Muhammad Ghori. It is a noteworthy fact that after Prithviraj's defeat by Ghori, Delhi was ravaged by infighting among various Muslim invaders ranging from Turks to Afghans to Uzbeks and Islamic slaves. The barbaric power struggle in Delhi mimicked the violent conflicts of the Caliphate in Arabia. It speaks volumes of the anarchy in Delhi, where 25 monarchs ruled through assassin, rebellion, sabot, sab, क्या है? जो भी है, and dethroned in rapid succession. In the same time period, less than half that number, that is 11 Ranas, donned the Mewar crown. Some of them have died fighting, defending their faith from the invaders. Needless to say, the longevity of the Maharanas' tenure and continuity of lineage ensured a stable and just rule for the citizenry in Mewar. There needs to be a detailed study on the impact of contrasting power-hungry Delhi invaders on governance. Yeah. आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में कंटिन्यू करेंगे बाकी का. Okay, thank you, Shekhar, and thank you, Neenar. Yes, so I think there is a interesting. Before we go for our final discussion, let me share something. So, for the audience who will be watching later or watching now, so the book is available in maharanas.com, .india. So you can get the book here itself directly. So here you have two options. So here you can get the book in English. The book is now also available in Marathi. So you can get the book in Marathi as well, language, and you will get the book citations, its contents, what are the chapters are there. So you can get all of this, and you can also get a overview of the author himself, his biography. And most interesting part, like when you order a book directly from the author's website, you get an option to actually get an author signed copy. So that's a very interesting thing. Like normally you will not get an author signed copy generally if you're not present at the book launch or some event. But here you can get the signed copy from the author himself. So take this opportunity and buy the book. It's a very interesting book, and it will teach you a lot of lost and forgotten history, which is not taught in general schools, in curriculums, in universities, in schools. So here are we see a few endorsements from various personalities, including Madhu Kishwar, Neeraj Atri, Kumar, Gaurav, IT professional and in Dallas. We also have from Richa Gautam. Richa Gautam is a very well-known author as well. So we have Mr. Vibhuti Jha as well, who has given his endorsement to the book. And finally, we also see
citation and recommendation from Mr. Sanjay Dixit. So it's a really well received book, well researched book, quite accessible in terms of language which is used, and quite entertaining as well, and filled with a lot of information and a bit of historical facts which are not available. So a request to everybody that if you are listening to this, the link is available in the description as well as in the chat. So do go ahead and buy the book. And before let me share one more thing which Rishi had shared. So Rishi, I'm sharing this so you can shed a bit more light into this. Yes. Let me see whether I have it or not. Yeah, it is there. Hold on. Yeah, so it should be visible to everybody now. Yeah, Rishi, if you can shed a bit more light what we are reading this here, give a bit more context. Yes, so the essential portion which was there, which we were discussing a bit earlier about dharma, right? So that being the uniting force amongst all of the diversities that we have. This is encapsulated in this para actually. So this is from a work of Sri G.S. Sardesai, who was a great Maratha historian. He talks about how after Khilji, Malik Kafur, Khilji's, or let's say Malik Kafur's invasion of Devgiri, Maharashtra actually fell into darkness, like, totally. Some parts of Konkan and Ratnagiri, those parts were independent, but the rest of it was totally under the foreign suzerainty. And from that time onwards, we see various works coming up and letters where there is this realization that religion has been destroyed. So then we see in Sri Guru Charitra, which is about Dattatreya Swami, Marathi text of 14th century, this word comes up, Maharashtra Dharma. So the Maharashtra thing actually was much more, it was not actually a very state thing. It was about pan-India concept. We can see from that text actually. So that Maharashtra Dharma actually encapsulates the principle under which Sanatana Dharma actually survives in India. And that is how it is explained over here with the 4 elements. So the first one is practices towards gods and injunctions of the Shastras, Deva Shastrachar. Number 2, local practices, which includes your language and state customs and all, Deshachar. The third is the family practices, Kulachar. And the last is Jatyachar, the practices based on your Jati. So in this, actually the first one, the Shastrachar, that actually is the primary under which all the other acharas are dependent upon. Without the first, you cannot have the last 3 at all. This is the condition for following Maharashtra Dharma. And we see this concept being applied totally after the author writes Sri Guru Charitra. We see it coming up again and again in works of the Varkari Santa like Sri Ekanath Maharaj. Later on, we will see this very much being propounded by Samarth Guru Ramdas Swami. In the letters of Shivaji Maharaj, you have this repeated again that we are followers of Maharashtra Dharma. And this actually became the bulwark of the whole how to manage diversity, especially, which we see later on. Like Shivaji Maharaj controlled portions of Karnataka and Tamil Nadu, right? So he had rule over there, and later on we see Marathas going up to Atak, right up to Peshawar, Afghanistan border, and then Odisha and Bengal and so on. We see that. So they were totally into this concept of Maharashtra Dharma. And I think we must actually remember this concept and actually try to analyze this more. Any comments, Dada, and others? Yes.
Yeah. I think we can read this text in one of our reading sessions. I think it will be interesting reading because I was not familiar, did not know that. I knew about the traditions, but not specifically in a very systematic way it was implemented during the Maratha rule. So we can read the text in one of our reading sessions in coming weeks. Yes, absolutely. Uh, yeah, this was a tidbit from me actually. Others can say if they want to. I think this is typical implementation of diversity in unity. I mean, we have a common culture, but then we are very separate, diverse habits of people. I think that is what keeps our culture as well as our diversity alive. We don't have to compromise. Abhay, your voice is dropping, breaking. हेलो, Yeah, now we can hear. Go ahead. क्या आप सुन पा रहे हैं? Yes, we can hear नहीं, you. मैं कह रहा था कि इसीलिए हमारे यहाँ ये एक यूनिटी में डाइवर्स यूनिटी में डाइवर्सिटी दिखती है कि एक कॉमन प्रिंसिपल है और उसमें हम डाइवर्स कल्चर्स को इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना तो हमको अपनी जो एकता है उसके साथ समझौता करना पड़ता है, ना ही हमें विविधता के साथ समझौता करना पड़ता है और हमारी संस्कृति टिकी भी रहती है। तो ये हमारे संस्कृति की विशेषता रही है। अन्य जगहों में देखेंगे तो या तो उन्होंने अपने डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया है या तो फिर वो अन्य देशों में बट गए, भाषा के नाम पर या अन्य किसी ऐसे विषय के नाम पर जो उनको अलग कर। हमारे यहाँ वो संतुलन रहा है, पर अभी क्योंकि हमने बहुत सारे वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स अपना लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा भी है। Yes. Neenar, Shekhar. Okay. So, यदि कोई नहीं बोल रहा तो मैं और एक बात जोड़ दूं yes, कि जैसे go मैंने ahead. अभी कुछ ही देर पहले बोला था कि हमारी भाषाओं में देख सकते हैं आप, हमारे पहनावे में देख सकते हैं या हमारे खान पान में भी आपको दिखेगा कि अ, कि हम लोग ये पत्तल में खाना या बैठकर खाना, आलती-पालती मारकर खाना, एक समय पर खाना, मतलब विविधता है पर वो एक कॉमन कल्चर रहा है हमारा। हॉस्पिटैलिटी एक कॉमन है, शादी-ब्याह में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो उसमें एक कॉमनैलिटी दिखती है। तो अ, अब मुझे नहीं पता कि आज के संदर्भ में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू स्टेट। अ क्योंकि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ये यूनिफॉर्मिटी पर आधारित है, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है। कम से कम हमने तो हमारे स्टेट के लोगों ने सोचा नहीं है कि कैसे हम इतने डाइवर्स सोसाइटी को मैनेज करें। क्या स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा जो इतने डाइवर्स सोसाइटी को अच्छे से मैनेज करे? तो वो एक चुनौती है। मैं Understood. एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, Go तो ahead, go ahead. ये जो फॉर्मूला है कि फर्स्ट प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स गॉड्स एंड इंजंक्शंस ऑफ शास्त्रास देन द अदर थ्री, ये काफी इफेक्टिव रहेगा क्योंकि प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स गॉड्स एंड इंजंक्शंस ऑफ शास्त्रास में ऑलरेडी वैरायटी इतनी है, तो वेरिड एक्सेप्टेंस होती है। इसके नीचे जब जाते हैं लोकल प्रैक्टिसेस, फैमिली प्रैक्टिस, कास्ट प्रैक्टिसेस में, इसमें बंटने का मतलब बहुत स्कोप है। तो अगर आप कास्ट पे फोकस करोगे तो कास्ट पे फोकस करोगे प्रैक्टिस टुवर्ड्स गॉड्स के ऊपर, तो उससे फिर तो प्रॉब्लमैटिक रहेगा क्योंकि उसमें बंटोगे। और फैमिली प्रैक्टिस में भी वही होगा। आपस अलग अलग फैमिलीज में बांट सकते हो, लोकल प्रैक्टिसेस में बिटवीन स्टेट्स बांट सकते हो, बिटवीन लैंग्वेजेस बांट सकते हो। पर जब प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स गॉड्स एंड इंजंक्शंस ऑफ शास्त्रस में जाते हैं,
उसमें ऑलरेडी काफी डाइवर्सिटी वैरायटी है, तो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वहीं से डिफॉल्ट आती है। Okay. So, one more thing. See, नहीं, एक एक go ahead. मैं नीनर की बोलो बात पर बोलो. बोल दूं हम्म कि देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना अभी, कि हम केवल डाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जब भी राजनीतिक चर्चा होती है, किसी भी विषय पर चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि हम ऐसे अलग है, हमारी भाषा अलग है, पर हम वो कड़ी भूल चुके हैं, कम से कम चर्चा में सामने नहीं आ रही है, जो हमें जोड़ती है। कि हमें जोड़ती क्या है? एक कन्नडिगा को एक राजस्थानी से क्या जोड़ती है, या एक बंगाली से क्या जोड़ती है, पंजाबी से क्या जोड़ती है? वो कड़ी पर चर्चा उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट ने ही, या हमारी जो सिस्टम है उसने ही सनातन धर्म को एक बुरे रूप में देखना आरंभ किया है, और सनातन धर्म ही हमें जोड़ती है। आप सनातन धर्म को ही शत्रु मान बैठे हो, पर सनातन धर्म ही हमें जोड़ती है, तो आप करेंगे क्या? जो जिसको आप ब्राह्मणवाद कहते हो, कि ब्राह्मणों ने ये पुस्तक लिखकर अपनी संस्कृति थोपी है, वही तो हमें जोड़ती है। पर आप उसको ब्राह्मणवाद के नाम पर गालियां दे रहे हो, नकार रहे हो, और इंडियन स्टेट इसको प्रमोट भी करता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आगे आप लोग चर्चा कीजिए, मैं और नहीं बोलूंगा। Yes, the Uh, yes, the yes, one more Protestant thing. Christian. Yeah, one more thing. So we have to remember that this uh, so-called democratic way of governance, right? So that is the invention of the 19th century, or maybe say, yeah, 19th, 18th century. America is the most example of this. So we have to remember that when we are talking about a democratic way of governance, we need to look at it that the demographics and the consumption pattern of that region. Right? It was generally a kind of a homogeneous society where democratic principles were implemented and they worked well there because everybody spoke the same language, same kind of clothing, same kind of consumption, same kind of food habits, okay, same kind of behavior, and also same kind of faiths they practice. So in those societies, democratic principles are very good. But when you are dealing with a diverse society like Bharat, where every 3 kilometers or 5 kilometers, the food habits, the language, and the people color changes, then democracy becomes a kind of a double-edged sword because there is so much diversity that you will not be able to create a kind of cohesiveness which democracy brings in a homogeneous society. So in ancient times, correct, we did not have democracy, but we were the most prosperous economically, socially, culturally, in terms of arts, commerce, technology. Correct, we were at the pinnacle of our civilization, and that happened on monarchy. So this myth of one solution fits all, that's something that needs to be more discussed with nuance. That which societies can be better governed by a monarchy, by a king, which society can be governed by democracy. So this is something we are not talking about or focusing about. That different regions, different kind of demographics require different kind of governance structure. So you cannot have one solution fits all, and that's what we are trying to do. We are trying to impose democratic principles on everyone in this world, but we are not considering that these societies have evolved. They have different historical perspective, different racial relations, social relations, different kind of consumption pattern, different kind of demographics that place brings in. So that's something we need to more like think about it, talk about it, analyze about it. It cannot happen. Why democracy has failed in Middle East? Why democracy has failed in Africa? There must be a reason why it has failed. True. Because they are not a practical solution for those kinds of regions.
So that is something is unscientific, correct? We are saying that democracy is the best possible governance structure of all the governance structure. That is uh, wrong logically, because you are trying to impose first principles to people of a one region to another region. That is not possible. So it is bound to fail. Go ahead. So I would like to disagree. I think Hmm. that personally, democracy is the most least violent way to for decision making in a large country, and especially when there is diversity. I think homogeneous countries, when they do democracy, it's not really democracy because everyone has the same mind anyway, and someone has imposed that mindset on them long before. In a diverse country, there is a chance of violence if you impose like through a monarch, and democracy is kind of more acceptable because then Wait. the will of the Wait. yes, Yes. Wait. Okay. So take an example of, correct, Chandragupta, correct, the one of the greatest yes, rulers of Bharat, correct. There was no democracy there, correct, but people had all the rights. yes, People people lived generally a free life. Yeah, there were a few rules which they had to of follow, course. correct. So my contention is this, that rather than putting a straightforward statement that democracy is the best way of governance, let's make it that where let's take the best qualities of democratic principles and try to incorporate them in like for autocracy or for uh, uh, like monarchs. Let's incorporate them. See, if a region has, take an example, correct. See, you take best example of, correct, Britain. Okay, Great Britain. Yes, Great Britain, Japan still has a king. Why Great Britain has a queen? For what reason? What is the logic behind having a queen? If democracy is the best thing, why keep it? वो वो जो लैंड है ना वहाँ का मेजरली कंट्रोल किंग करता है। किंग का लैंड है वो, इसलिए किंग को हटा नहीं सकते आप। no, no, समझ रहे हो, वो सबसे no, बड़ा no, that प्राइवेट लैंड ओनर the बन गया idea is अभी तो। different. The idea is that जापान का in अलग है। the who is the owner of the country, in that the who is the sovereign in UK, that is the king or queen. And in यूके India, में प्रॉब्लम what ज्यादा happens होती is है जाने से। usually sovereign. Hmm. अभी Go ahead. इलेक्टेड सोवरेन का भी कॉन्सेप्ट है, तो प्रेसिडेंट हमारे इलेक्टेड सोवरेन होते हैं इंडिया में। हाँ, तो वही है। Yes, see, मतलब मेरा जापान का बोलने का अलग मतलब वो है। नहीं है। मेरा बोलने का मतलब वो हाँ, नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि डोंट सी, आपने ब्रिटेन में भी मिक्स मैच किया है, करेक्ट। यू हैव क्रिएटेड amalgamation. You have Yes, kept your tradition and you have incorporated democratic principles, ठीक है। तो फिर we have to भारत account for में that. Right now, we don't have any tradition because all our अरे नो kings were stripped of their titles, right? नो नो, दैट्स व्हाट आई डेमोक्रेसी एम है सेइंग, क्या वो पता नहीं आज तक। डेमोक्रेसी है दैट्स क्या व्हाट वो आई किसी को पता No, नहीं, I'm ठीक है। saying what tradition will we look back to because the kings are stripped of their titles. exactly, so नहीं, that's what I am saying, that democracy as a like pure principle cannot function। उसके लिए एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी चाहिए होता है, लाइक होमोजेनस हाँ हाँ। पॉपुलेशन, वहां पर डेमोक्रेसी काम करेगा। एक और चीज जहां है पर दादा। ये प्रिंसिपल मैं नहीं आई है मैं वहां आई पर आपको, गो हेड अब है। हाँ, एक मिनट रुको। मुझे एक मिनट मैं बोल लूँ, एक मिनट रुको रुको। हाँ हाँ आप इसमें बोल ये दीजिए फिर मैं डेमोक्रेसी का बोलता जो ये फंडा है ना, ये पूरा रॉन्ग है, इसका पूरा प्रेमाइस ही रॉन्ग है। डेमोक्रेसी जो होता है ना, ये नेशंस को सबवर्ट करने के लिए होता है। डेमोक्रेसी एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल एक रिटार्डेड सॉल्यूशन है, वो कभी काम नहीं करेगा, होमोजेनियस सोसाइटी में भी काम नहीं करेगा, ठीक है। होमोजेनियस सोसाइटी में तो सबसे ज्यादा बर्बादी लाएगा, वो डाइवर्स सोसाइटी में तो फिर भी खाली टुकड़े ही होंगे, ठीक है। होमोजेनियस सोसाइटी में वो एक्सटेंशन कर उस कंट्री खत्म कर देगा वो, ठीक है। डेमोक्रेसी आप लॉन्ग समय तक नहीं चला सकते होमोजेनियस सोसाइटी के अंदर। दूसरा जो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सबवर्ट करने के लिए क्यों है, ये डेमोक्रेसी जो होता है ना, एक एम्पायर जो होता है ना, हमेशा वो इसको आगे एक फॉरवर्ड एक आइडिया की तरह रखता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक
इन एंड इटसेल्फ आइडिया जो होता है ना दिमाग के अंदर कभी लोगों के आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है ये आइडिया कभी काम नहीं करेगा। एक नॉर्मल बच्चे को भी पूछोगे ना, उसको उसको भी पता है कि डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल फ्लॉड है, क्योंकि वो कभी काम नहीं, मोनार्की फिर भी एक बार काम कर देगा, पर डेमोक्रेसी कभी काम नहीं करेगा। डेमोक्रेसी जो होता है ना वो बे प्रिंसिपल पे वो हमेशा एक एम्पायर जो होता है वो अपना जो हेजिमोनी है ना उसको बरकरार रखने के लिए दूसरी कंट्रीज पे इम्पोज करता है हमेशा। जहां पे एम्पायर, देखना कभी जहां पे मेजोरिटी कंट्रीज होंगी ना डेमोक्रेसी की, वहां पे एक सुपर पावरफुल एम्पायर होगा हमेशा। ये जनरल रूल है, ये दोनों एक साथ में काम करते हैं, ये या तो डेमोक्रेसी या सुपर पावर दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है, डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीका है ये नेशंस को सबवर्ट करने का और उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। एक किंग को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है, पर एक डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ 30% जो उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको खाली कंट्रोल करना पड़ता है। अभय, अ, मुझे भारत के लिए क्या लगता है ना कि हाँ, डेमोक्रेसी की अपनी समस्याएं हैं, पर भारत के संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत इज एन अथॉरिटेरियन स्टेट। हमारा स्टेट अथॉरिटेरियन, इट्स नॉट इंटायरली डेमोक्रेटिक। तो हमने असली में डेमोक्रेसी देखी नहीं है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ आप समझे कि बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है अपना। क्षमा कीजिएगा कि आप देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बाबुओं का कितना कंट्रोल है। फिर हमारे बेडरूम में घुस गए लोग ये बताने के लिए कि कौन किस रिलेशनशिप में है, कौन किस में नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, इसमें घुस गए। कोट काले कोट वाले तो अब बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी तो ऑनेस्टली हमारे देश में है नहीं। हमारा देश अथॉरिटेरियन है। अ, तो इट्स अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो मुझे नहीं पता कि डेमोक्रेसी चलेगी तो कब, कितनी चलेगी, यदि सच में यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, या फिर अ, क्या डेमोक्रेसी और मोनार्की से भी अच्छा कोई मॉडल हो सकता है। हम लोग कुछ अलग अलग आविष्कार कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। या कुछ ये भी कर सकते हैं कि अ, जैसे बोला जाए धार्मिक डेमोक्रेसी, इंस्टेड ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेसी वी गो फॉर धार्मिक डेमोक्रेसी, वेयर वी से कि हमको सेक्युलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अ, धार्मिक राष्ट्र में कभी भी हमने किसी के मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया नहीं, तो हमको सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए। ये प्रश्न हमने कभी किया ही नहीं। हमने जो मूल सिद्धांतिक प्रश्न थे वो किए ही नहीं। हमने बस जो गोरों ने हमको बेचा हमने अपना लिया बिना सोचे समझे। इसीलिए हम उसको भुगत रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ चर्चा चली है कि डेमोक्रेसी चाहिए या नहीं। हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको किस प्रकार की गवर्नेंस चाहिए। डेमोक्रेसी हो और उससे अपना काम चल जाए तो भी ठीक, डेमोक्रेसी नहीं हो उससे भी काम चल जाए वो भी ठीक। मूल बात यही है। पर मुझे एक जो भारत की मूल बहुत ही नितांत आवश्यकता लगती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा कल्चर डिसेंट्रलाइज्ड है, हमारे लिविंग लाइफस्टाइल डिसेंट्रलाइज्ड है। तो स्टेट जो है गवर्नेंस मॉडल वो सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता। और आई थिंक आवर कंट्री इज टू सेंट्रलाइज्ड। इसीलिए प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए लोगों में झगड़े होते हैं और डाइवर्सिटी को मैनेज करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वी आर टू सेंट्रलाइज्ड आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मुझे लगता है डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, while keeping the sanctity of India as a country alive. Anybody else? नीना शायद कुछ बोलेगा, आई थिंक। So I had the point that democracy and authoritarianism doesn't go in conflict as well, because you can ask for consent for the authoritarianism. Say like freedom of speech, right? You can the public can consent to what speech they don't want.
the majority opinion of course rules, right? Okay, I will finish our discussion with this last point. See, Mhm. we know from okay, Rishi will speak. No, 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 From no, no. No, from please. No, historical you speak. from historical perspective, correct. Generally, the society is run, controlled, managed, and given shape, given direction uh, by the elites, and that elites could be your bureaucrats, politicians, businessmen, artists, narrative makers, writers, correct. So they have generally shaped people's perception, right? And that would be 15, 20% people. The numbers could vary. So if that is, and still now that is the case, right? So in that situation, correct, how much influence your vote has, because the policies, the state structure, the incentives, disincentives, and decisions are going to be taken by those 20% of people. In a democracy, you cannot go and say, Modi ji, don't fight a war with Pakistan. Is that feasible? Because the majority will always be fragmented. Correct. Correct. We have a word called the silent majority. Why it is called silent majority? Because those 80% of people who are common folk, they will never be able to unite and give one voice. So what is the utility of your vote if it's not going to influence the state structure, state decisions in a significant manner, which shows your power, the power of 80% over 20%. The 20% will always have the power to do whatever they want, and they will shape narratives and make you believe that what they're doing is absolutely right. Over to Rishi and everybody else. Yeah, the topic is too tough for me. Okay, ये anybody बहुत else? ही कॉम्प्लेक्स है ये issue. हाँ, please, someone else. Okay, Neenar, Shekhar. पर दादा इस पे मेरा एक विषय मेरी एक बात है कि क्या मे क्या एक बी बार द रिपीट कर दो, क्या प्रोसेस ऑफ टॉपिक था बोलिए। हाँ, शेखर बोलो what you saying? नहीं वो रिपीट करने बोल रहे हैं। एक बार वो अच्छा टॉपिक रिपीट अच्छा करना। मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली जो समाज है, समाज का जो नीतियां हैं, उनकी पॉलिसीज है, उनका गवर्नेंस है, टैक्सेशन है, इकोनॉमी है, वॉर है, वो सारा डिसाइड करता है कौन? पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, ठीक है, और आर्टिस्ट जो नैरेटिव फैलाते हैं। तो ये लोग ही तो सारा चीज कंट्रोल करते हैं। आज भी ये लोग ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपने 5 साल में एक बार वोट दे दिया, करेक्ट, वो वोट दे दिया, यू चूज अ लीडरशिप, वो लीडरशिप उसके बाद जो मर्जी वो करेगी, करेक्ट, दे विल मेक देयर ओन लॉज, दे विल हैव देयर ओन पॉलिसीज। अब आप तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि नहीं, हमें एक गवर्नमेंट नहीं चाहिए नेक्स्ट 5 साल के लिए। तो आपका जो वोट है वो एक हद तक तो हेल्प करता है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो काम नहीं करता है। Quinda, That is you same. can call academic man Dada. for this. काम नहीं I think he has. Who I has? think he has solid views. You can call Who? academic man for this We will, discussion. yeah, we will do. We have some things planned, Eh. but that takes time. इस पर मेरा एक विचार है कि मान लीजिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है, तो 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी नहीं होता। ये भी तो हो सकता है ना कि 2014 के बाद भले ही ये जितना आर्गुमेंट गलत है। कुछ नहीं आर्गुमेंट ही गलत है। नहीं, सुनो, आर्गुमेंट ही गलत है। लेट अभय फिनिश, देन ये जो सिचुएशन आई है ना, ये डेमोक्रेसी की वजह से आई है। जो नहीं वो मैं पहले अपने मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये जो सिचुएशन है ना, आप बोल रहे हो, तो प्रमाइस है कि इसके पहले वाला डेमोक्रेसी था। पहले डेमोक्रेसी था ही नहीं ना। प्रॉब्लम शेखर लेट अभय फिनिश एंड देन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कभी था ही नहीं। अरे रुको, लेट अभय फिनिश एंड देन तुम बोलना। अभय फिनिश। जैसे
2014 में भी परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन चुनाव के आधार पर हो जाता है, मतलब ऐसे कू का चक्कर नहीं होता है हमारे देश में। तो भले ही 2014 के बाद जितना परिवर्तन हमें अपेक्षित था उतना नहीं हुआ, पर हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम नहीं हुआ, हमारे पक्ष में ही हुआ है बहुत कुछ। तो एकदम डेमोक्रेसी को खारिज कर देना, मैं उसके पक्ष में तो नहीं हूँ। और जैसा कि शेखर कह रहे थे, तो उससे पहले तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का ही शासन था ना। तो फिर मतलब कांग्रेस के आने से पहले अंग्रेजों का शासन था, तो फिर उनके शासन में हमारा क्या होता? तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं थी। तो क्या है कि डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है, जो मुझे लगता है कि जो भी सत्ताधारी है उनकी थोड़ी बहुत तो जवाबदेही होती है जनता के प्रति। नहीं तो फिर मोनार्की में क्या होगा कि एकदम जवाबदेही नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हमें क्या करना है एज पीपल, हमें और अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा पढ़ लिख कर कि हम स्टेट से अकाउंटेबिलिटी मांगे कैसे। कि हम जब किसी बाबू से बात करें तो हमें उनसे क्या बात करनी चाहिए कि वो कैसे हमारे प्रति जवाबदेह हो, या काले कोट वालों से क्या बात करनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने आर्ग्यूमेंट को शेप करना चाहिए कि वो उनकी जवाबदेही हमारे प्रति बढ़े। और कैसे लोगों को एलीट बनाए जो इस प्रकार के कठोर प्रश्न इन सत्ताधारियों से या उच्च पद में बैठे हुए लोगों से पूछे। ये थोड़ा समाज का काम है, थोड़ा बहुत समाज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनसे कठोर प्रश्न कभी किए ही नहीं। हमारे समाज में वो जागरूकता ही नहीं थी कि हम कैसे इनसे अच्छे प्रश्न कर सके। इसीलिए तो ये सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं कि रेगुलेट, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है कि जनता जब प्रश्न पूछे। तो हमें चाहिए कि हमें जोर से बोलना पड़ेगा कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दो, आप क्यों अपनी जवाबदेही से भाग रहे। जो हम नहीं करते वो करना बहुत आवश्यक। Okay. Shekhar, go ahead. क्या बोलना था भूल गया। Huh? Niner had something to say. Niner, तुम बोल दो. Let Shekhar rewind his reel. अभी तो नहीं, शेखर के आर्गुमेंट पे बोल रहा था तुम, अभी नहीं है कुछ। अच्छा शेखर, तो did you get the memory point? हाँ नहीं, कुछ नहीं आया, पर मैं फिर भी कंटिन्यू कर लेते हैं। करो करो। डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, जैसे आप वोट की बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी जो है ना, एक सिस्टम कैसा है समझो, ये नए लोगों को अंदर नहीं आने देता उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे मोनार्की फंक्शन करता था ना, मोनार्की में कैसा होता था कि एक ही जो किंग होता था वो सेलेक्ट करता था कौन उसका एडवाइजर है और कौन उसको पावर मिलेगी। यहाँ पे अंदर क्या होता है, जब ये सिस्टम जब अच्छा, एक और इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा, जो ट्रांजिशन है ना मोनार्की से डेमोक्रेसी, वो हमेशा एक आउटसाइड पावर करता है, वो कभी कंट्री खुद कभी नहीं करता वो ट्रांजिशन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमको कि कंट्री लोग कभी ट्रांजिशन नहीं कर सकते एक मोनार्की से डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, वो इम्पॉसिबल है, मोनार्की बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो नहीं कर सकते, ये हमेशा कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करेगी बाहर से, वही ये ट्रांजिशन कर सकती है। अब जिसने ट्रांजिशन किया है ना, वो उन्हीं लोगों को डेमोक्रेसी में पावर देगी जो उसका फायदा कराएंगे। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, ये एक तरह से कुछ एक गिने चुने लोगों को पावर देता है और वही सेलेक्ट करते हैं कौन पावर में आएगा। ठीक है, वोटिंग वोटिंग जो है ना, ये फ्रॉड है, वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वोटिंग का आज तक मुझे समझ नहीं आया है वोट करके किया क्या है, हमने कुछ नहीं उखाड़ा आज तक वोट देके। और वोट देने का कोई मतलब भी नहीं है ना, आधे लोगों के वोट हो भी जाए, काउंट हो भी जाए, तो आधे लोगों के काउंट नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में तो आप बोल रहे हो ना सबका साथ, ये विकास जो भी नौटंकी कर रहे हैं अभी पार्टीज यहाँ पे और पहले भी, तो उसके अंदर आधे लोगों का ही हो रहा है। इंडिया के अंदर तो 30% ही चुन कर जो भी है चुन रहे हैं, बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे।
डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपली फ्लॉड है, ठीक है, वो कभी काम कर नहीं सकता है, ठीक है, वो एक छलावा है, एक इल्यूशन है जिसको हमने बिठा रखा है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ ये इंडिया के अंदर मोनार्की ही चल रही है, ठीक है, डायनेस्टी चेंज हुई है खाली, गांधी डायनेस्टी से अभी बीजेपी डायनेस्टी आई है, ठीक है। यहाँ यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, ये पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता लोग अभी भी इस मैं इल्यूजन में कैसे है कि पावर चेंज कर सकते हैं। मैं तो लोग, आम मैं आदमी तो कुछ नहीं यही कर बोल सकता। रहा था ना कि मैं तो यही बोला कि इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है ही नहीं। इंडिया इज एन अथॉरिटेरियन ये स्टेट। तो वो डीप मैं स्टेट वही वाला बोला। आर्गुमेंट है ना कि इंडिया में डीप स्टेट है, जो भी आता है वो बस फेस चेंज होता है। नहीं नहीं, हाँ, इसमें डीप स्टेट का कुछ नहीं है, ये नॉर्मल पीपल जो है ना, हमको सामने दिखते हैं ना, वही कंट्रोल करते हैं बस, हम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या कर रहे हैं, बस उतना है, सब दिखता है। डीप स्टेट में हमको पता ही नहीं कौन है, हमें तो यहाँ दिख रहा है ना कौन क्या है। अमेरिका के उसके अंदर हो सकता है क्योंकि वो रिच और उन्होंने सब बनाया था ना, तो वहां पे हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, पर यहाँ इंडिया के अंदर नहीं है, सब गरीब थे और कुछ लोगों को अमीर बना रखा था ब्यूरोक्रेट्स तुमने। पर वगैरह तो डीप स्टेट ही है, लुटियंस दिल्ली। पर अच्छा, मेरा यूरोप एक का अलग केस है, पर इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर। हाँ, बोलो बोलो। मेरा एक विचार है कि क्या डेमोक्रेसी, ये जो एलीट है, इसमें परिवर्तन करने के लिए आपको अधिक अवसर प्रदान नहीं करती? क्योंकि अ, यदि फ्री सोसाइटी हो तो जो एक समय एलीट नहीं थे वो फिर भी एलीट बन सकते हैं, या उनके पास अधिक संभावना होती है एलीट बनने की, ऐसे समाज की तुलना में जो फ्री सोसाइटी नहीं। बात है सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी की, क्योंकि भेदभाव तो समाज में रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वेट पर वेट वेट सोशियो वेट वेट इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या डेमोक्रेसी ज्यादा देती है लोगों को? अभय 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 so when you are talking about socio-economic mobility, so do you think the before advent of democracy there was no socio-economic mobility across the globe? I'm not saying India, across the globe. और वो कम था, अभी नहीं थी ना ज्यादा है? तभी तो देखो, नहीं नहीं था ही नहीं नहीं, मैं नहीं मोबिलिटी थी नहीं ही नहीं नहीं ना तभी, देखो चंद्रगुप्त है ना, वो देखो राजा बन गया, देखो समझ रहे हो, इतनी ज्यादा इमोबिलिटी थी, वो उसको नहीं पर भगवान प्रकट करके गए। वो मोबिलिटी के लिए आपको समाज में विद्रोह करना पड़ता था। आप समझिए, वोट आउट से हटाना और समाज में विद्रोह करना, मारकाट करने में अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कोई मारकाट नहीं बचा मोदी जी के आने में। और आप जो कह रहे हैं सोशियो मोबिलिटी, अरे यार, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, कैसा नहीं मचा, नहीं उसको नहीं, एक उसको होने में नहीं, ये बीच में कैसा मत बोलिए प्रीमाइस है आप। आपका, ये मुझे बताओ। बीच में मत बोलिए आप। ठीक है, कैसा ओके कर लो, मुझे ओके पूरा कर ओके लेने ठीक है, दीजिए। ऐसा कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ कर लो कर लो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, कास्टिज्म भी जो था, उसको, उसमें भी जो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी थी, उसको आने में 400-500 साल लग जाते, 300-300, कम से कम 100-200 साल लग जाते थे। अभी उतना समय नहीं लगता है सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी। कुछ तो है ना कि मे बी टुडे इट्स बेटर, द सिचुएशन इज बेटर व्हेन इट कम्स टू सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी। पहले कुछ ही एलिट्स के बीच में सत्ता रह जाती थी, अभी एलिट में अधिक लोग जुड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। क्या क्या ऐसा लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? शेखर? हाँ, अरे ये मैं उस पर बोल रहा था, ये किलिंग पे बोल रहे थे ना, मैं उस पर डिसएग्री करूंगा कि किलिंग जो है ना उसका रेट नहीं कम हुआ है, वो अभी भी वैसा ही हो रहा है, बस अब दिखना बंद हो गया है। ठीक है, अब बंगाल का ही केस ले लो, कहीं और का भी केस ले लो ना, ठीक है, बस बीजेपी के आने के बाद बंद हुई है, ठीक है, उस ट्रांजिशन के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा था तब बंद नहीं हुआ है किलिंग, ठीक है, एक पावर चेंज होने के बाद में चेंज है वो, ठीक है, वो तो होना ही है क्योंकि पर्सनालिटी चेंज हो गया है, पर जब ट्रांजिशन हो रहा था तभी नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पहले भी नहीं हो रहा था किलिंग। नीनर? हाँ दादा। बोलो, तुम कुछ बोलना है इसके बारे में?
नहीं, पर मैं उतना मतलब एंटी डेमोक्रेसी नहीं हूँ कि मेरे को तो मोस्ट सिस्टम्स एक जैसे ही लगते हैं। पर एक पॉइंट शेखर का अच्छा You लगा are कि स्टेट को रिस्ट्रिक्ट। contradicting your things. You are saying कि democracy मतलब the the system of democracy and others are almost same. You are saying that then you say I like democracy. For what reason? हाँ, बिकॉज इट इज लेस वायलेंट व्हेन ट्रांसफर ऑफ पावर हैपेंस in authoritarianism and monarchy and all. When they do transfer of power, usually say like when British came to rule us, they had to do battles. They killed many people Mm-hmm. and came. Even Islamic rule came when they had to do battles. They killed many people. To democracy, that cannot happen. They would have to destroy as an external enemy. Yes. Okay. So your primary point is correct. So the overall level of violence has reduced when we do transition of power. Correct. That is Yeah, your primary argument. That democracy, the one from your perspective, one positive point about democracy is that when the transition of power takes place, it is much less violence and much smoother. Okay. yeah, Yes, but the problem here is that you are missing a point. You are missing a point that from time immemorial, correct? yes, Transition of power can be less violent. That I can understand. In terms of data, also you will see that violence has reduced over the years. Okay, but has democracy has fundamentally changed or significantly changed the governance system, the governance pattern? Who hold power? Who held power 500 years ago? Who holds power now? Is that common people? Because the on ground, we need to look at the of on course ground not. situation. We need to look at the on ground situation, that whether democracy has given more power to the common folk and taken power from the traditional ruling elite. And my No, perspective, no, it has not. I don't dispute that. Hmm. I'm just saying that, like, obviously, like someone you can say that common people Hmm. have a lower IQ and actual who get into politics have higher IQ. So Hmm. Hmm. they are more intelligent, more socially capable, and all. That's how they get to positions of power at all. But I think mobility as a whole Hmm. is much more in democracy. Yes. Okay. Now we'll finish our discussion with last point. Okay. अच्छा, When you इसमें मैं say एक आर्गुमेंट हाँ बोलो देना चाहता हूँ। बोलो बोलो डेमोक्रेसी, बोलो ये डेमोक्रेसी नहीं ना, तुम किस उस पे ले रहे हो? इंडियन डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, यूरोपियन डेमोक्रेसी, किस उसमें ले रहे हो? कौन सी? Indian, हाँ, इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा Indian कुछ ही ले लो। नहीं है, मोबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे तो। नहीं, इंडियन क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी में मोबिलिटी है ना, क्योंकि अगर हम तुम मान रहे हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो तुम मानना पड़ेगा कि 1947 से अभी तक डेमोक्रेसी थी, 2014 तक। उसके अंदर तो तुम सोशलिज्म, इन्होंने वो छप्पा मार रखा है सबके ऊपर, तो उसमें तो कोई ऊपर आ ही नहीं सकता था। जो जो तुम बोल तो रहे हो ना, अब हट चेंज गया, ऊपर अब ऊपर लोग आ रहे हैं आते ना। हैं, वो इकोनॉमिक तो नहीं, पर हाँ, वो डेमोक्रेसी की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजिशन की वजह से आ रहे हैं। तुम कैपिटलिज्म में आ गए ना, इस वजह से आ रहे हैं। डेमोक्रेसी का उसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। वो मनी जो है ना, मनी वो कर रहा है। पॉइंट क्या है? मतलब डेमोक्रेसी में अगर कैपिटलिज्म के साथ करना चाहिए फिर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तो जो बोल रहा है ना मोबिलिटी का, वो मोबिलिटी जो है ना, वो ये हम्म। इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हो रही है। डेमोक्रेसी का इसमें लेना देना नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी साइड कैरेक्टर है उसके अंदर। Okay, the crux of the argument between Shekhar and Niner and other people are that according to Niner, democracy is a very important factor in governance, and it has made the society a bit more better as per Niner. And as per Shekhar, he says that okay, democracy has minimal or very less impact
on overall society. If I can summarize this way. Democracy is more participative than other systems. You can say that. See, that is a semantic part of it, correct? If it doesn't make my life better, your life better, but how does it matter? Singapore people are very happy. Are they democratic? Is a state of Singapore democratic? I think they are, Are because they had some are recent एक elections. पॉइंट बोलना चाहूंगा wait, पार्टिसिपेशन पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा wait, रुको ठीक है see, तुम Ninar, see, the thing is if you take the laws which are there in Singapore, correct, and if you can compare this, the way democracy functions in Western Europe or Eastern Europe or in America, it is nowhere a democratic state, okay, in terms of first principles. So our Singapore people are trying to revolt. They are very happy with the state. Yes. Then I Why? think Shaker's argument wins in that. No, it's not about winning. See, it is about, see, the thing is, I know, but I'm saying because he said that capitalism is giving them mobility and happiness, right? That one. yes, see, the thing is, we now, मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी हाँ, अब शेखर बोलो हाँ. नहीं मैं उस पे ऐसा बोल रहा था कि डेमोक्रेसी जो है ना उसका कोई लेना देना नहीं है सोशल मोबिलिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर सोशलिज्म लगाया तो सोशल मोबिलिटी बनती, अब वो डेमोक्रेसी ने बंद नहीं की है, वो सोशलिज्म ने की है, ठीक है, और मोबिलिटी भी चालू कैपिटलिज्म ने की है। डेमोक्रेसी एक खाली वो है, क्या बोलते हैं उसको, कुआं है, कौन कूद रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, सोशलिज्म कूद रहा है, कैपिटलिज्म कूद रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। डेमोक्रेसी बैठा है उधर कुआं, अब तुम उसमें से पानी भी निकाल सकते हो, ऐसा समझ रहे हो। डेमोक्रेसी का मोबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक इल्यूजन है, पता नहीं लोग मतलब करते हैं इसको, मैंने काफी बार सुना है दूसरों से भी, पर मोबिलिटी का और डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और पार्टिसिपेशन वाला जो है ना पॉइंट, ये एक्चुअली में उसके अंदर ह्यूमन उसके अंदर जाता है, जो बिहेवियर है ना पैटर्न, ये पार्टिसिपेशन जो है वो अगर किसी को ऑपरेट करने में भी उसमें मिलेगा ना लोगों को मौका, तो वो भी उनको फ्री लगेगा। जो हिटलर किया था ना, हिटलर ने क्या किया था, उसने वही किया था, सब पूरे पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करवाया था उसने, और कुछ नहीं किया था उसने, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन वाला डेमोक्रेसी वाला और ये पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट है ना, ये दूसरी जगह भी काम आता है, ये डेमोक्रेसी का वाला नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। इसको ऑपरेस करना हो ना और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो लोगों को उसमें मजा आएगा, पार्टिसिपेशन वाला मिले तो उनको, तभी प्रॉब्लम जब दूसरा कोई करे तो, ठीक है। रिगार्डिंग कैपिटलिज्म के लिए ना अथॉरिटेरियनिज्म कम चाहिए आपको, मतलब फ्री मार्केट के लिए, या फिर एक ऐसा समाज जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। तो डेमोक्रेसी का तो पता नहीं, बट वी नीड फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट, ये मेरा पक्ष हमेशा से रहा है कि हमारा स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी और सोशल अफेयर्स में कम होना चाहिए। आगे डेमोक्रेसी से होगा या मोनार्की से होगा वो आप लोग तय कर लीजिए। Okay, last words to all of you before we sign off. Yeah, it's a discussion on elite theory basically, so we can discuss this with academic men actually. ये टॉपिक ही अलग है, महाराणा से हट चुका था, I didn't talk much. Okay, very good. Now it was a good discussion. I think we exchanged some very good ideas, okay, which are good. So again, before we sign off, so again, this is the book. This book is available in Hindi, in Marathi as well, in the website, and also in English as well. So let me share my screen again for the audience, where you can get this book. Okay, yeah, here it is. Yeah. So here is the website. The link is available in the description. The link is available also in the chat. It's in the pinned chat. For people who are interested in learning more about the history of Maharanas and their bravery
and how they protected Dharma over 1,000 years by laying their lives and shedding their blood for this. So go ahead, do read the book, okay, and do join us again. We are having one more book reading session at 6 p.m. where we talk about Hindu Guide to Advocacy and Activism, where we will be learning about solutions, how the Dharma can protect itself and how it can function and work to keep it alive. So we'll see you at 6 p.m. On another book reading session, and at दादा 8 p.m. एक मैं बोल Yes. देता हूँ, ऐसी ही चर्चा ना हमें किसी दिन सेक्युलरिज्म पर रखनी चाहिए कि हमारे देश को सेक्युलरिज्म चाहिए या नहीं, और चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। ये मैं मानता हूँ सेक्युलरिज्म पर चर्चा बहुत आवश्यक है। अभी यदि आपको समय मिले तो जरूर कीजिए। हाँ ठीक है, वो हम लोग वी विल डिसाइड एंड वो टाइम अगले हफ्ते ही होगा डिस्कशन, या हम लोग रात को भी कर सकते हैं अराउंड 10:30. So we'll do that. So thank you everybody for joining. Thank you Shekhar and Ninar for your participation and reading the book. So we'll see you at 6 p.m. and 8 p.m. We have a special program with our guest where we'll talk about the history of Rath Yatra. So today we had the Rath Yatra happening. So we will discuss the historic significance, incidents, and unknown stories of Rath Yatra across East India, including Bengal and Odisha. So do join us at 8 p.m. for that. Till then, thank you everybody. Jai Shri Ram, Vande Mataram. Jai Shri Ram, Vande Mataram.